Yeah, welcome back once again to the beautiful Rawalpindi Cricket Stadium. Second game of the day. It's match number 20, the last league match. It's ABL Stallions taking on Engro Dolphins. Yeah, this is what happened in the first game of the day. Lake City Panthers, who were asked to bat first, managed 158 for 6. Umar continuing his form for 41. Imran Jr. getting 3 wickets, and in reply, UMT Marco was chasing down with some ease in 13.3 overs. Imran Randhawa top scoring with 69. Right now, all eyes on this game as far as Allied Bank Stallions are concerned. And the Panthers played a game earlier. They lost that game to UMT Marcos, but it's a new game. And as far as the points table are concerned, Allied Bank Stallions were placed at number 3 with 10 points. If they win this one with a better run rate, they will go to number 2 and quite possibly number 1 position also. Engro Dolphins, 7 losses in 7 games without a point too. They would like to have a point on their side too. Yeah, all eyes on this encounter. It's Allied Bank Stallions who picked up beautifully with the few inclusions of Jandad Khan into the side. They really picked up Ehsanullah also for Dolphins. Good sides taking on each other, good formidable cricketers. Yasir Khan also showed some form and the experience of Shoaib Malik coming handy for Allied Bank Stallions. The pitch has been good. This has been asking questions to the batters. If you're technically correct rather, you will be successful. And this is a surface that demands a different you, a more compact you as a batter, and very disciplined as a bowler. It has cracks which are very compact still. Overall, a very good pitch for the cricket. Shah Faisal, the pitch master, how do you see the surface? Well, it's the second game of the day, Ali, and it's a bit tired, so don't be surprised if the ball grips on it. And bowlers will have a say, but batters will have to apply. Champions Cup T20 has been a revelation. If talking about pitch and conditions, the skippers would have to make a decision at the coin toss. Marina Iqbal is out there with both the captains. It's gorgeous afternoon here at Rawalpindi Cricket Stadium as we are ready for the contest between Allied Bank Stallions and Engro Dolphins. I've got the two captains with me. Mohammad is leading Allied Bank Stallions and Fahim Ashraf will be leading Engro Dolphins. And we've got Mr. Bilal Khilji who will be officiating this match. Haris, go for the flip. Head is the call and head it is. Fahim, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे. ट्रैक थोड़ा बेहतर लग रहा है आपको और अगर बॉलिंग बैटिंग की बात करें तो थोड़ा सा मोमेंटम ऑन एंड ऑफ नज़र आ रहा है. तो आज क्या स्ट्रेटजी होगी? आज बिल्कुल जैसे हम लोग कल खेले हैं, कोशिश करेंगे कि वैसी गलतियां ना करें. आज पिच काफ़ी बेहतर है तो कोशिश करेंगे कि अपनी बैटिंग को थ्रू आउट लेके जाएं और अच्छा टोटल एक बोर्ड पे सेट करें. और क्या टोटल आपके माइंड में है? आज देखें जैसी पीछे है, कोशिश तो ये है कि 160 से ऊपर करें. बाकी खेलने पे है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि 150 160 से ऊपर ही करें. काफ़ी बातें हुई हैं, लास्ट मैच है, क्या पॉजिटिव्स इसमें से लेके जाना चाहेंगे? देखें जी, कोशिश ये है कि आज का मैच जीतें और सबसे ज़रूरी ही जीत होती है. जीतेंगे तो पॉजिटिव चीज़ हमारे साथ जाएगी. आज हमारे लड़के भी, कल के मैच में भी नए लड़के थे तो काफ़ी एनर्जी फील्डिंग में नज़र आई है. तो जो एनर्जी होती है ना, आपका पॉजिटिव इंटेंट नजर आता है, वो आपको एक एनर्जी देता है, पॉजिटिव चीज़ देता है. और क्या कोई चेंजेस हैं आपकी आज साइड में? बिल्कुल ताहिर बेग वापस आया, एहसानुल्लाह वापस आया और तैयब आरिफ उसका डेब्यू है. चलें, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर द गेम. थैंक यू वेरी मच. हारिस, बॉलिंग एज अ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, पिच अच्छी है, तो थोड़ा सा कंसर्न होगा कि पहले बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं, हमने वैसे भी पहले बॉलिंग करनी थी क्योंकि इक्वेशन इस तरह है कि बाद में आपको चेस करना पड़ता है, तो हम खुश हैं. इक्वेशन की आपने बात की, डेफिनेटली वो आपके माइंड में होगी. फ्रॉम अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ें मजीद बेहतर करना चाहेंगे? वही सर्कल को हमने बेहतर करना है मजीद, क्योंकि हम विकेट भी दे रहे हैं और उस तरह रन भी नहीं कर रहे हैं. तो हम चाहेंगे कि सर्कल को जितना बेहतर कर सके ताकि अपोजिशन को प्रेशर मिले. और क्या चेंजेस हैं आपकी साइड में? एक चेंज है, यासिर खान खेल रहे शामिल की जगह. चलें, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर द थैंक यू. Well, the news from the center is that Engro Dolphins have won the toss and they have opted to bat first.
Right, the big news, Dolphins winning the toss and electing to bat first. The two umpires, Mr. Faisal Afridi on the right, Mr. Imranul on the left. Good umpires officiating this game. And let's have a look at the playing 11 of the both sides. Engro Dolphins, again, just like they've done in every game, making changes. Shahbaz Javed, we'll see him for the first time. Talented wicketkeeper batter. Tayyib Arif, Shah Faisal, remember from Pakistan under 19, a very good batter also. Tahir Bey coming in, and so does Ehsanullah, the mighty fast bowler. Just the one change for Allied Bank Stallions. Yasir coming in place of Shamil. The youngster had a couple of opportunities, but now he's been benched. Talking about the Dolphins, they would really want to finish on a high. Good to see young Tayyib Arif in the playing 11. He's a very talented youngster from the Pakistan under 19. To see how he fares at this level with the big boys. Talking about big boys, Sabzada Farhan is a big boy of domestic cricket. He would like to end this tournament on a high. A couple of half centuries for him. Tahir Bey also showed some promise, not enough consistency. That has been the problem for Engro Dolphins. Sarfraz and Fahim would like to take one win home from this campaign. It's Saturday afternoon. It's been gorgeous. It's turning into evening. We've got decent attendances down towards our left. And they will be looking for a tighter contest as we head into the knockout stages, the last game of the league stage. Sabzada Farhan has had a couple of decent innings in the tournament, but a lot was dependent on his shoulders for Engro Dolphins. Hasn't lived up to the mark as we expect. 2,511 runs with strike rate of 127. And his partner was rested for a few games. Mirza Tahir Beg, he's back. He's a bit of a dasher, likes to go big. 124 the strike rate. In 30 games, 629 runs with an average of 23.29. And marking his run is Jahandat Khan. He's one of the latest sensations of Pakistan cricket, the young all-rounder. Really bowled splendidly in his first game. Just having a little word with the umpire. Harris is there, Faisal Afridi. He would know a thing or two about those landing areas for fast bowlers, being a very good one himself. Yeah, he's just still not comfortable from that popping crease where he lands actually. Although they're having this meter to just mark the run up, but he still was doing a bit of a gardening on the surface. Well, meanwhile, whenever they get ready, let's have a look at the criteria for Stallions to qualify for the finals. Whatever is given to them, they need to chase down in 17.2 overs. Somewhere around 17 overs, they would like to do that. And they've got first thing in their hand that they will be batting second, so they will know what to do. Yeah, that's a big advantage to them, knowing what kind of equation they need. It's quite strange to see bowlers marking their run-up now. Generally, they do it during the break. But games come thick and fast. Although today was one of the rare days where the morning game finished quite early. Generally, games have been running late, and the window between the two games used to be very short. Not the case today. Yeah, Ali, you mentioned the scenarios for the final. The points table makes a very interesting look. UMT Markhor is holding that position right now. But look at that run rate in the fourth column. 0.606, the net run rate for UMT Markhor. Allied Bank Stallions, if they win today, they will move up to 12 points. And to make up that deficit of 0.08, they would have to have a slight advantage of around 16 to 18 deliveries roughly at this stage as we speak. So whatever Engro Dolphins are going to get, they would need to get it around 17 to be on the safe side. And that'll be a huge achievement because UMT Markhor has led the table throughout the championship. But those two losses, especially the one yesterday, came at the wrong time for them. And
Stallions, you would say, is the form team alongside Nurpur Lions. 20 wickets for Jandad in his 23 games. Economy, a touch higher side, 9.19. The quality he has, he would like to pull that thing back. Yeah, huge advantage, whichever team goes to the final. Just before that, they don't have to play that qualifier, right? A bit of nerves there, Faisal. There'll be another knockout contest. Once again, movement right out the thick outside half of the bat. Will run away. His outfield is very, very fast. Jahandad got punished for what was a very good delivery. Yeah, Sabzada Farhan should consider himself very lucky. There was swing, as you said. That's how he plays. A bit of a nothing shot. Maybe just wanted to play it towards onside. Hanging his bat right there. Thick outside edge has earned him a boundary. But not a confident start, you have to say. Oh, that went through the gate. Harris has also fluffed it. But this was terrific delivery. Look at those lengths of the first two deliveries. We were comparing Jahandad to Akif in the morning, and that's the exact reason Jahandad has been so successful. Look at those teasing length and that movement in the air. Yeah, that delivery to Fakhar Zaman yesterday. Similar to this, the length. That's the difference you create once you play international cricket and tour with the team and come back to the domestic. You look different because you are different. Yeah, the knowledge of what is the right game plan for right conditions. Definitely he's showing that. This one, look at the carry. Just banged it in a little short of a length. It went away with the angle. And Sabzada Farhan was fending at it. Yeah, definitely not easy for the batters against Jahandad. Yeah, we've been talking about it, the advantage being to the bowlers on the surface and the weather conditions. But you have to have that skill to be bowling in the right areas still. That length should be perfect if you have to be successful. And Jahandad showed it in the very first game of the tournament. Got it right. Afaq Afridi yesterday got a hat-trick. Bowling in the right length, in the right areas. Now Sabzada Farhan realizes the enormity of the battle. This one, he was well on to it. Knowing where his off stump is was very clear and compact, just letting this one go. But Jahandad, that release is just so beautiful. That's why you see that carry. Generally, he's not a bang into the pitch bowler. He's just a kiss the surface, as we call it in cricketing slang. The ball just kisses the pitch and just flies. That is because he's got such a beautiful release. A slip in place for Jahandad. Yeah, you can just tell that he's not comfortable facing Jahandad, Sabzada Farhan. Sabzada Farhan is a very good red ball player. I think these initial 5 deliveries, he should just think back and get his thinking cap on in terms of the way he would open with a red ball. The kind of movement Jahandad is going. I know it's T20, but for a while at least, try and draw back on those strengths of your perfect and compact defense, knowing where your off stump is. Sabzada Farhan can make up for lost time if he remains and survives this spell. Clearly pitching down and too high, but a very impressive over nonetheless from Jahandad. Engro Dolphins 4 for none. We've talked about batting pairs, but here is a very good bowling pair. Jahandad and Muhammad Ali from the other end. Makes it tough for the batters when there is quality bowling from both ends. Faisal, 41 wickets for Muhammad Ali. 4 for 28 his best. Economy
is okayish, 7.29. But he's been very good. He's just transformed into a good white ball bowler, Mohammad Ali. A leave, a very good leave. Good to see in a way, because that's the need of the hour. Yeah, you talk about Muhammad Ali. He makes a very good pair with Jahandat, left hand, right hand combination. We talk about batting pairs like you said, but bowling pairs, fast bowlers hunt in pairs. Good attendance to cheer these players on. But yeah, in different bowlers in a way that Ali is a bang-in bowler into the deck. Different challenge for the batters. Harris is on his toes. One slip in place, 4 fielders on the offside in the ring. Oh, disaster. Huge mix-up. Sabzada Farhan, I thought initially was coming and then he stopped. And Tahir Beg, by that time, was too late for him to turn around. Another catastrophic dismissal for the tall opener. Oh, poor Tahir Beg was brought back in the side for this game. And this is what has happened. Called for it. Sabzada responded for a couple of steps and then said no. And he was just, look, standard there. Could not do anything at that moment. He will be mighty disappointed. Yes, no, and sorry. That's what Sabzada Farhan said in the end, but too late for Tahir. He's gone for a duck. 4 for 1 Engro Dolphins. Yeah, not many things have gone Dolphins' way, but one thing that has gone their way is that they found Waqar Ahmed. Scored a beautiful 50 in the first game on his debut. Yeah, that age too, don't, never mind that. Out, 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 yes! Straightforward decision for the umpire. It looked out. Poor Waqar goes. Well. Waqar, who's coming off the back of a half century. This is terrific bowling from Muhammad Ali, though. The length was such that he had to come out onto his front foot. And he just got smashed right in the middle of the stumps. He got a little stride. Did he get outside the line? That was what he was trying. But I don't think he was able to. This is not the kind of start that Engro Dolphins would have wanted. Well, nothing wrong here. Well inside Muhammad Ali. Have a look at that front stride. Well, it was threatening to come in, but it didn't. On the knee roll. Going on to hit the leg stump probably. Good decision. Waqar out for a golden duck. 4 for 2 Engro Dolphins. Tayyab Arif. Tayyab Arif makes his debut. Very young and compact batter. Huge test for him. Not easy to come into a side that has been on a losing streak like the Dolphins have been. That's a tentative prod, a nervous prod. Ali doing the right thing, pitching that ball up, drawing him onto that front foot. Yeah, coming from Pakistan under-19s, Tayyab Arif. He's here because it was a great delivery, just nipping back in. On the back leg, that was hitting middle and leg. Great performance. Such experienced campaigner with the skill. Muhammad Ali. Both the batter and the bowler from Sialkot
Tayyib Arif from Sialkot, Mohammad Ali from there. Nicely played, finding the middle of the bat. Sialkot is one of the hotbeds of talent in Pakistan when it comes to cricket. Very talented players coming out of that region to go with the northwest of Pakistan, where quite a lot of players have recently come on. Shoaib Malik obviously led the way. Ejaz Ahmed originally, and then Shoaib Malik, true ambassadors of that city. And obviously Shoaib Malik, part of that great brand of Sialkot, the Sialkot Stallions. This is Allied Bank Stallions. Yeah, that's a confident start. Replacing his fellow under-19 player, Riazullah, who I thought played well in the game yesterday. 4 for 2 in 2. Slightly away from his body, but finding the middle of the bat. Not much footwork. Sabzada Farhan himself is coming off of a difficult period in his career. He played for Pakistan, then was found out against some short pitch stuff. It does really play on your mind. This is Jahandad's first over. Now on target, nearly got him on that occasion. This is what we expect. Look at that length and the carry. Good pace also. And it was handled well with somebody like Sabzada Farhan, having so much experience. It's their last inning of this tournament. He would like to make a mark. Just a couple of good innings. But the team, wherever he plays, expect better. Because once you're played for the national side, like Jahandad, everyone expects you to be better and different. The thinking tank for the Dolphins, Mahmood Ahmed. Sajid Shah, the bowling consultant, also there. A bit of worried, man. They shouldn't be worried anymore. It's the last game anyways. Too early to be worried for the next one. Once again, static feet from Sabzada Farhan. With was on offer, couldn't capitalize. It's not an easy position to be in which the Engro Dolphins coaching staff is. They've had a torrid time. They were expected to do better, but they've really been going downhill since the halfway of the tournament. Yesterday was a complete nightmare. They would love to put in a performance today, at least to wipe out the bad memories of yesterday. Jahandad taking the slip out, getting him to mid-wicket. Probably will look to bring the ball in to Sabzada Farhan. This time Sabzada Farhan calls. Tayyib Arif had to be mindful of the ball to get past the stumps on the other end, but then easily completed single. He's taking his time like he usually does. But is it really required in this format? That's the question. 10 deliveries for 5 runs. You expect batters to use that long handle early on in the inning, first 6 overs. Yeah, this can really be an unhappy place once you're not winning. This will be interesting. Went for the booming drive. This is one of Tayyib Arif's favorite strokes. We saw a lot of that in the Pakistan Junior League a couple of years ago. He looked very young back then, baby-faced, still very young. And it was exciting to see because he's
got that beautiful free-flowing style, but like I said, this is big boys league. This is a different challenge. Yeah, Jandad is making few fans. That's good to see him do good at international level and at this level too. Well, nicely clipped away. Sabzada Farhan. Wrong line from Jahandat. The fine leg was up in the ring. He only had to get some bat on it. That will really help his confidence. 3 done. Engro Dolphins 10 for 2. Lots of Jandad Khan fans. Good to see. That's good. Good following. He's from Rawalpindi as well. I don't know if this has come from his subdivision or not, but plenty of support, plenty of banners. Nicely played, beautifully timed. Not game to come back for the second. What are you doing, Sabzada Farhan? Obstructing the field, maybe. Or avoiding the throw. Muhammad Ali, good start to this spell. Was on target as he usually is. This was a run out on the second delivery of his overall. Look at that. Such a sorry way to go. And then the very first delivery, nipping back in. No chance for Waqar Ahmed to survive on that. Again, an expensive drive for Tayyib Arif. The very first delivery, a bit of nervous start for him. But we really want him to do well. Wish him well. So important for these youngsters, young batters to do well. Flowing drive. Don't bother running for those. This will give Sabzada Farhan more confidence. He's growing in stature. And this one was probably the best of the lot so far. Just erring in length, just a little bit. And the margin of error is such less that batters these days, they're all set and ready to hit you away. And that's what he did. A bit of a force in that shot too, rather than more of a timing. The placement also for good from Sabzada Farhan. Well, running hard, looking to come back for the second. Will do so very comfortably. Growing in confidence. This is better. Experienced Sabzada Farhan took his time. And now he's scoring at better than a runner ball. He had only 4 of his first 10 deliveries, but has really caught up very quickly. Yeah, as you said earlier, he has that skill and potential to catch up on that strike rate. It's important that he doesn't give it away early, because that's put so much pressure, especially on this side, Engro Dolphins. Not many big names in the side. Qasim Akram, Shahbaz Javed, really looking forward to see him perform. Kept a little low. This time from Muhammad Ali. You remember Sabzada Farhan getting out in one of the earlier games, just going on to that back foot. Muhammad Ali with 16 wickets is right on top. Musa Khan joined top, but Ali with a better economy rate. Shahid Aziz very impressive with 14 wickets. Nisar also will have more games to play. So would Usman Tariq, who's on 12 wickets. Usman Tariq having the best economy rate of the 5. Slip has been taken out now. Mid wicket is in place. Got on top of it, but straight to Moaz Sadakat. It was there for the taking, and Moaz Sadakat got in the way. The leading wicket taker strikes yet again.
Yeah, he wanted to keep it down but couldn't. Sabzada Farhan again got the start, could not quite convert it to a big one. He's usually very good with that front foot, Muhammad Ali. The trouble is on the other end. You can tell that's not very quite intended, but good straight to the fielder. Gone for 15, 17 for 3. Kasim Akram has one last opportunity to make a mark in this tournament. 974 runs, 550s, 124. The strike rate, very talented, but hasn't really transformed that talent into performance. That has been a concern. Yeah, if the talent doesn't produce performances, soon you'll find out that people would stop talking about the talent, because performances matter, especially when you get opportunity after opportunity like Kasim has got throughout this tournament. Four done, Engro Dolphins once again struggling. 17 for 3. Tayyib looking to move his feet against Jahandad. Slightly longer follow through. That's the last wicket. Ali does get a bit of an extra bounce. It got big on Sabzada Farhan, who was trying to ride the bounce. Couldn't do so, couldn't keep it down, and Mas Sadakat is a very, very good fielder. Triumphant Muhammad Ali. Change of voices here in the comm box. Tariq Saeed has settled in. He'll be joined by Salman Butt. शुक्रिया शाह फैसल। लगता है कि एंग्रो डॉल्फिन्स ने वहीं से अपनी बैटिंग शुरू की है, कल जहां इसका इख्तिताम किया था। 38 पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे कल इसी वक्त इनके। जहां गेंद को स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं, और कल डॉल्फिन्स की नाकामी के मुकम्मल जिम्मेदार आफाक अफरीदी थे। जहांदाद की तरह जो गेंद को स्विंग कर रहे थे, और यही खेलते हैं, मकामी हैं, इसलिए इनके हामी भी जा बजा आपको मिलेंगे मजमे में। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, खुशामदीद आपको भी और देखने वालों को। इस बार ऑन ड्राइव किया, एक रन के लिए भागे हैं तेजी से तैयब। यंग प्लेयर है, खूबसूरत खेलते हैं और अपने करियर के शुरुआत में है, लेकिन जांदाद ने कल बड़ी क्लास की बॉलिंग की, और जो वजह थी उनकी इतना बासर होने की और इतनी विकेट्स लेने की, वो उनकी लेंथ थी, उनकी लाइन थी, और आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, और बैटर्स को किसी किस्म का रूम नहीं दिया, कोई लेंथ ऐसी नहीं दी कि जिसके ऊपर वो कट या पुल शॉट खेल सकें। और ये अपनी नफीतुली बॉलिंग की बदौलत ही इतने ज़्यादा बासर रहे हैं और मैच पे इन्होंने इम्पैक्ट बनाया है। और आज सुबह जबकि पिच पे मॉइस्चर की बात हुई, लेकिन जो यूएमटी मार्कर्स के बॉलर थे उन्होंने खासी शॉर्ट बॉलिंग की थी, उनके मुकाबले में अगर इन्हें देखें तो इनकी लेंथ काफ़ी फुल है, और इसीलिए ये बॉल को स्विंग करने में कामयाब रहे हैं।
आज क्योंकि छुट्टी है इसलिए शायकीन खासी बड़ी तादाद में आए हैं। लगता है कि ये इनके क्लब मेट्स हैं, ये क्रिकेटर्स लगते हैं जिस तरह सज धज के आए हैं। जी हाँ, ये एक ही जैसी जर्सी इन्होंने पहनी हुई है और गालिबन ये एक ही क्लब के हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने प्लेयर को इस तरह से बैक करना। एक और अच्छा गेंद, और क्या ही अच्छा हो कि एक बॉलर जो इतनी नपी तुली लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है उसको एक स्लिप भी दी जाए, क्योंकि ये चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, बार बार बैटर का आउटसाइड एज जो है उसे बीट कर रहे हैं। जहाँ क्योंकि गेंद को दोनों तरफ ये मूव करते हैं इसलिए खेलने पे मजबूर करते हैं राइट हैंडर को। जरा सी नीचे रही, इस पिच में ऊंच नीच है, बाउंस और रफ्तार दोनों में। आखिरी गेंद इस ओवर की, सीधे बल्ले के साथ ही इस पिच पर वापस डिफेंड किया। एक और अच्छा ओवर था जहांदाद का, सिर्फ एक रन बन सका 18 पर 3। पहले 4 रन पर 2 विकेटें गिरी, फिर 17 के स्कोर पर तीसरी गई। पार्टनरशिप्स का फुकदान रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में ही डॉल्फिन्स के लिए। और ये दुनिया भर में एक कल्चर होता है, जो दुनिया के बड़े टेस्ट ममालिक हैं वहाँ के जो क्लब क्रिकेटर्स हैं ख़ास तौर पर उनको लाया जाता है टेस्ट मैचेस में, वनडे इंटरनेशनल मैचों में मुख्तस किया जाता है कोटा टिकट्स का क्लब्स के लिए, ताकि खिलाड़ी जो हैं खुद से ज़्यादा बड़ों को देखें खेलते हुए और इससे खेल से मुतालिक आगाही और बढ़ती। और आगाही भी बढ़ रही है और विकेट्स का नंबर भी बढ़ा है, एक और गिर गई है। 18 के स्कोर पर चौथी विकेट गिरी। जमान खान आए, एक स्लोअर बॉल था जिसमें विड्थ भी थी, शॉट था, लेकिन तैयब बदकिस्मती रही उनकी, उसे शायद थर्ड मैन पे खेलना चाहते थे लेकिन सिर्फ बाहरी किनारा लगा और एक आसान कैच हारिस के लिए। यहाँ बाउंस मिला और उस एंगल से भी नहीं सही तरह निमट सके, नो बॉल का कोई इम्कान नहीं है। गेंद आहिस्ता ही इनटू द पिच किया था। जमान खान ने पहली गेंद पर तैयब आरिफ को वापसी का परवाना दिया, उनने बनाए 3, 18 पर 4। सरफराज अहमद और उनकी टीम का ज्यादा अच्छा वक्त नहीं गुजरा है रावलपिंडी में। 18 पर 4 हैं और ऐसे में खेलने के लिए शहबाज जावेद आए हैं, इनको अब मौका दिया गया है आखिर में, विकेट कीपर बैट्समैन। जी हाँ, शहबाज जावेद लाहौर से इनका ताल्लुक है और प्रेसिडेंट कप्स में बड़े टॉप के कीपर रहे हैं, स्टार परफॉर्मर थे उसके, और बहुत मेहनत की इन्होंने और बड़ा मुंतज़िर थे वो इस प्लेटफॉर्म के कि यहाँ पर उन्हें मौका मिले। तो लीजिए, आ गया उनका वक्त, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। यहाँ अच्छी बैटिंग कर लेते हैं शहबाज, अच्छे स्ट्राइकर हैं और इनको पजीराई मिलती है लाहौर क्रिकेट में। हम ज़्यादा तारीफ से गुरेज करेंगे क्योंकि नज़र लगा देने के ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे। गेंद पड़ने के बाद ज्यादा उछली नहीं, कासिम अकरम टाइम करने से कासिर रहे। ये वो विकेट है यहाँ पर, ये आखिर में ये कुछ भी शॉट नहीं था, कट करने के लिए गए। सबसे जो इसमें देखने की चीज़ थी कि
जो कदम थे वो अपनी जगह पर स्टिल थे। जब आप कट स्ट्रोक खेलते हैं और इतना वक्त आपको मिलता है तो एक पैर आप गेंद के करीब ले जाते हैं, वो पोजीशन क्रिएट होती है, लेकिन इसमें कोई पोजीशन नहीं थी। कासिम अकरम, जाहिर है जब आप एक ऐसी आउटफिट में होते हैं जहां कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो जो जीत की तरफ जाता हो, तो आपकी गेम में वो चीज़ नज़र नहीं आती। और यही चीज़ शायद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो कि अच्छे प्लेयर्स भी हों, तो जब टीम के हालात कुछ इस तरह के होते हैं तो वो भी अपना ग्राफ उनका भी नीचे की तरफ चला जाता है। और शायद वो इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पर उमर अमीन में भी देखे, साहिबजादा फरहान हैं, ये हैं, लेकिन दूसरी तरफ राय ये है कि यही सीनियर प्लेयर्स हैं, इन्हीं को टीम को राह दिखानी चाहिए। ये गेंद गिनती में नहीं आएगी, रन शुमार हुआ। लेकिन जो फ़हीम अशरफ जो इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, वो एक सवाल ये भी रहा है कि उनने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया। वो पहले 4 में या पहले 5 में वो बैटिंग करते हुए क्यों हमें नजर नहीं आए। सवाल तो अच्छा है, लेकिन बंदा ठीक नहीं है इधर जवाब देने के लिए। ये अच्छा शॉट है, इस बार गैप में गई है गेंद और ये यकीनी 4 रन होंगे। शहबाज जावेद ने बाउंड्री मारी और थोड़ा इनका भी हौसला बढ़ेगा और इनकी टीम को भी अशद जरूरत है रन्स की। और जाते जाते पावर प्ले की भी एक गेंद बाकी है, तो अच्छा डील किया इन्होंने शॉर्ट बॉल को, अच्छा बैलेंस था, पिवट किया और बिल्कुल ठीक प्लेसमेंट। विकेट कीपर की बैटिंग की खासियत समझी जाती है, एक स्वीप शॉट खेलना और दूसरा पुल शॉट खेलना। पुल ने दिखाया, बर वक्त पहुंच गए थे, मां सदाकत। अच्छा ओवर जमान खान का, विकेट टेकिंग साबित हुआ 25 पर 4। जी हाँ, ये दिन ज़रूर बदला लेकिन कहानी नहीं बदली। एंग्रो डॉल्फिन्स इब्तिदा में थोड़ा टेंटेटिव थे, अच्छी बॉलिंग भी होती रही और इब्तिदा इस रन आउट से हुई जो कि एक गलत फहमी का नतीजा था। साहिबजादा फरहान ने आगे जाकर ना बोल दिया। ये गेंद बहुत अच्छा ऑफ द पिच अंदर आई है, सी मूवमेंट, कोई मौका नहीं बैटर के लिए लेग बिफोर हुए। और ये देखिए साहिबजादा फरहान 1-2 स्ट्रोक्स इन्होंने लगाए लेकिन उसको लंबा नहीं चला सके, इस कट स्ट्रोक को कंट्रोल नहीं कर सके और एक अच्छा कैच मास का। और ये वो विकेट जो कि इस आखिरी ओवर में गिरी, शॉर्ट एंड वाइड बॉल था इनटू द पिच और ये आखिरी स्ट्रोक इस पावर प्ले में 4 रन के लिए शहबाज ने खेला। यहाँ ये पावर प्ले का एक कम तरीन स्कोर भी था इस बैरियर टाउन चैंपियंस कप T20 में, 25 रन 4 विकेटें। इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो बेहतर किया है। इससे पहले 28 पर 2 विकेटें इन्होंने गंवाई थी डॉल्फिन्स ने बारफोर्स के खिलाफ मैच में। 25 पर 4 खिलाड़ी गंवाए। उस्मान तारिक, एक और बड़ा इम्तहान, रिवर्स स्वीप किया और खेल गए इस बार शॉर्ट थर्ड के ऊपर से। कासिम अकरम 4 रन के लिए, संभलने का मौका नहीं दिया उस्मान को उन्होंने बॉलिंग क्रीज पे। आते ही उल्टे हाथ का वार किया इन्होंने और इस बार उसको कामयाब रहे प्लेस करने में। एक और शॉर्ट बॉल इस बार खेली लेकिन सीधी मिड विकेट के हाथ में, एक ही रन। रिवर्स स्वीप को अब मामूल समझा जाता है क्रिकेट में, जिसकी इब्तिदा जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ही की थी। मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियादाद ये शॉट बहुत पहले खेला करते थे। डिलीवरी इस बार बाउंस मिला लेकिन रन्स भी शहबाज के लिए और अच्छी दौड़, दूसरे को भी वापस चले आए। अच्छा एटीट्यूड दिखाया अभी तक क्योंकि ये इनका पहला मैच है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे और आते साथ ही जो 4 गेंदें इन्होंने खेली हैं उसमें एतमाद में कहीं भी इनके कमी नज़र नहीं आई। और तेज़ रन लेके स्ट्राइक की तरफ आना मतलब है कि आप चैलेंज लेना चाहते हैं। और
इस बार एक रन बनाया है, इत्मीनान से खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पिक कर रहे हैं इनको। जी हाँ, ये लेग ब्रेक थी आखिरी। ये उस्मान तारिक और इन दिनों जनूबी अफ्रीका में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अबरार अहमद, दोनों में आपका फ़र्क क्या लगता है, अबरार और उस्मान में? सलमान, कद का फ़र्क है सबसे पहले तो, ये लंबे हैं और वो इतने लंबे नहीं है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा एक्शन का फ़र्क है, थ्रू द एयर स्पीड का फ़र्क है। और 7 ओवर्स का अख्ताम, 33 पे 4 डॉल्फिन्स। खेला जाएगा वनडे टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में जो ख़वातीन चैम्पियनशिप हो रही है यहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, ये तमाम सफ़े अव्वल की ख़वातीन क्रिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले कप्तानों का फ़ोटोशूट हुआ। फातिमा सना, जिनको आलमी शोहरत मिली है, पाकिस्तान की कप्तान हैं, वही क़यादत करेंगी स्टार्स के खिलाफ। उनके मुखालिफ टीम की क़यादत सिद्रा अमीन करेंगी। ये भी पाकिस्तान की ओपनिंग बैटर है T20 क्रिकेट के अंदर, अच्छी फील्डर है। मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा तेज़ रनर भी हैं बिटवीन द विकेट्स। इनकी हमने एक इनकी सीरीज़ कवर की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो उसमें बहुत ही शानदार रनिंग की थी इन्होंने। विकेट कीपर कितनी देर जो है वो अपनी स्वीप को रोक सकता है, ये भी पता लग जाएगा। जहां क्योंकि ये परवाह नहीं करते स्पिनर कोई भी हो, डैब करके एक रन यहाँ पर हासिल किया। यहाँ पर पहला हदफ क्या होना चाहिए? पूरे 20 ओवर ही बैटिंग करें, क्योंकि ये ऑल आउट होते रहें 20 ओवर से भी पहले। जी हाँ, मौजूदा हालात में तो वही इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इनको उससे एतमाद भी हासिल होगा, और कोई ना कोई ऐसी पोजीशन ज़रूर आएगी जहां पर ये लॉन्च कर सके, बशर्तिया कि ये पार्टनरशिप जो है 15-16 ओवर्स तक जाए। और इन्हें जल्दी की ज़रूरत भी कोई नहीं है, क्योंकि ये टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही चुके हैं। तो ऐसे में बेहतर है कि ये इससे एतमाद हासिल करें, इस मैच को पहले से बेहतर खेलने की कोशिश करें। मां सदाकत एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, हर मैच के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। खासा बाउंस मिला, वही स्वीप जिसे हम देखने के मुंतजिर थे। शहबाज ने खेलने की कोशिश, दूसरे विकेट कीपर के हेलमेट पर लगी कंकशन, टेस्ट होगा। रीत और रिवायत के मुताबिक 37 पर 4। Lights are turning on now. This is not a different situation or a new situation for Engro Dolphins. Quite familiar with this. They've put themselves yet again. 4 gone, 37, 8 overs done. And look at that, a wild swing. It bounced in Haris. This one right off the back foot, but just a single. You would expect that being the last game, there will be some flair, something to fight for as a team, as an individuals. But that still hasn't kicked in, Shah Faisal, for Engro Dolphins. Not at all, and that's the most disappointing thing, because all these players, they have a lot at stake.
they're young, this opportunity is a massive one. If they're experienced, they have their name tag, their reputation online. So you'd expect for personal pride, they will fight and dig deep. But instead, most of them took the easy route by not even fighting. Qasim Akram has one last chance to improve his tournament. He's been mightily disappointed. Something to look forward to tomorrow. It's the final, the Women's ODI Championship here at Rawalpindi Cricket Stadium. They're here witnessing some live cricket. Tossed up nicely. No run there. Well, a good time to be out there, getting inspired from all these cricketers. Wow, how heartening it is to see the women's here in attendance. Obviously, they will have their big moment tomorrow when they line up for that final. It's a 45 over a side game. It will be an early start, but country's leading cricketers will be taking part in that. 2 teams have made it to the final out of the 5, so we can expect an evenly contested game. Fatma Sana, Sidra Amin, 2 of the biggest names in Pakistan women's cricket. Again, no run. Has been a disciplined over. Just 3 off it. 9 gone, Engro Dolphins, 4 down on 40. That's the big final for tomorrow. Like I said, Fatma Sana and Sidra Amin, the 2 big names. Surprising to see 2 other big names, Nida Dar and Alia Riaz. They didn't make it to the final, their teams. But these 2 will be in the spotlight tomorrow. Conquerors led by Fatma. Through this time. Just delayed his shot to precision Mars on that occasion and picked up the gap. Quick on that occasion. Shabazz is relishing this opportunity. Mars providing him with the length and the width. But the timing and placement was top class because he delayed his stroke to hit that gap between the 2 square fielders on the offside. This one tossed up, not in control. And just a single. Some resilience being shown by Shahbaz and Qasim. Qasim had plenty of chances. And he's experienced enough to steer his team out of some trouble. Off the back foot, into the leg side. They need to capitalize this over. They've got a boundary already. 7 off it, 2 more to go. Well, the sun is setting. We've had another very good day. Evening gets very chilly very quickly. Runs have come via singles either side of that boundary. Still 1 to go. 8 of the over already. Very decent over under the circumstances. Huge fan following he has, and rightly so. Jahandad Khan. Full toss, just punched in the gap for 2. He was quite respectful for it. I don't know what the reason was, but 2 to end the over. 10 coming off it. 10 gone, 4 down on 50, and it's time for drinks.
Well, fifth one has gone down for Engro Dolphins. Zaman got his second in the first delivery of the second over. Engro Dolphins are in trouble. Just 50 on board. Half team is back in the hut. And skipper walks out. Fahim Ashraf. Oh, he's firing in. Zaman will have to bowl that one again. Just dropping it short. But if you're a batter and you're about to receive a delivery like this, there's nothing much you can do. Have a look at that, Zaman. Just that tailing Yorker. It wasn't a Yorker actually, it did skid on from the length area. A wild swing. Trying to hammer it into the leg side. Had to pay the price, Shabazz. Just lower this one. Fahim Ashraf, being the captain, can look something out of the remaining overs for himself and for the team. Yeah, whatever's happened throughout the tournament, Fahim decided to stick to his batting position. Didn't come up the order to sort out the issues or the jitters that their top half have had. He's been happy to come at 7. Nothing different today. Driven and driven through the gap with some power and precision. Such is the ability of Fahim Ashraf. That's why we kept begging the question, why would he not promote himself? Have a look at that. Probably the best shot of the day. Beautiful flowing bat swing and a good flourish as well. It's a typical left-hander's grace. Fahim Ashraf off the mark in grand fashion. Have to bowl that again, just straying down the leg. Overcorrection of line from Zaman. Yeah, I think most of us had a talk with Fahim that why did he not promote his order, batting order, but the only answer we got was he wanted to give more exposure to the youngsters. One way to do it is being there in the middle and guide them, because he probably was in the best form if you look at the batting lineup. But he opted not to do that. Down the crown for single. Well, Zaman Khan is not very tall. He doesn't get much bounce anyway, but these last few balls have kept really low. He's got a low arm, very slingy. That ball, have a look at that. But he managed it well because he took the option to play it with the straight bat. Yeah, the clarity is there for Fahim. Other batters, they're probably premeditated to go into the leg side. Oh, nearly there for Zaman. Qasim just hanging his bat outside of his body. He's too paced and Zaman varying. You just cannot afford to play out in front. Players who've done well, they've allowed the ball to come close to them. Qasim trying his hard to finish on a high. Change in field now. We've got 45 and push the short mid wicket to deep. No single, dot to end, 7 coming off it. 11 gone, Engro Dolphins 5 down on 57. This has been a regular sight. Beautiful sunsets in Rawalpindi. Winters are here. Lovely colors, horizons.
We've witnessed some orange, some purple and pink as well in the skies. But Engro Dolphins, they've been colorless. Yeah, they have. It's fall time here in Rawalpindi. Watching Usman Tariq talking about different colors. We've seen the leaves changing color in this part of the world. Really created some beautiful colors on the trees. And a very, very proud Pakistani flag. Really, it lifts up the spirits of everyone, all of us included. When we see the green with a star and crest, that's the twilight colors as well. Absolutely stunning. Kudos to the cameraman for capturing this beautiful pictures. Usman just given away one so far. Off the back foot. You have to be careful with it. Against Usman Tariq going off the back foot. Qasim Akram just one. Meandering along this innings as slowly as the sun is setting in the distance. Nice. Long pause from Usman, just waiting if there's something on offer from Fahim. At this stage, he's probably not going to step out. Anything in his zone, he might. Going with the spin. Managed to put his body behind the line. Fahim Ashraf. Bag of tricks from Usman. We've seen throughout the tournament the players have been able to wait long enough for him. They've been more successful against him. But they took the option to hit straight down the ground too. Good bowling, just two coming off it, 12 gone, 59 for 5 Engro Dolphins. चैंपियंस की तलाश का काम जारी है। आखिरी मरहले में पहुंच गया है ये मुकाबला और इस वक्त पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। चंपई उजाला है, सुरमई अंधेरा होने में अलबत्ता कुछ वक्त बाकी है। सुरमई अंधेरा इस डॉल्फिन्स की बैटिंग पर वो हमें ज़रूर नज़र आ रहा है। अली यूनुस इत्तेफाक करेंगे। जी बिल्कुल 100%। ना सिर्फ इस मैच में, इस टूर्नामेंट की कैंपेन में ही सुरमई अंधेरा छा रहा है डॉल्फिन्स की। कुछ काम नहीं किया है, चेंजेस करके देख ली, बैटिंग ऑर्डर करके चेंज करके देख लिया, लेकिन वो जो सुरमई अंधेरा है वो नहीं टला। कासिम अकरम और यहाँ पर फ़हीम अशरफ की पार्टनरशिप अहमियत की हामिल है। अब्बास आफरीदी इसके बाद हिटर हैं। अच्छा पिकअप शॉट, गेंद गैप में चली गई, सही जगह पर खेल गए थे फ़हीम अशरफ। 4 रन्स, अच्छा इस्तेमाल किया रफ्तार का। या फ़हीम और कासिम दो ही ऐसे प्लेयर नजर आए जिन्होंने कुछ कोशिश की है। स्पेशली अगर फ़हीम की बात करें, अच्छे बैटिंग टच में नजर आए और पिंडी की पिच पे इनको वैसे भी खेलना पसंद है। बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, कट पुल अच्छा खेलते हैं, ड्राइव भी अच्छी कर लेते हैं, कलाइयों का इस्तेमाल भी करना आ जानते हैं। इस बार दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि फील्डर ने अच्छा अग्रेशन दिखाया। हमलावर हुए गेंद की जानिब माज सदाकत। ये काबिल तारीफ हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो सेलेक्टर्स की नज़रों में होंगे। हसन नवाज, माज सदाकत या फिर मोहम्मद नाफे।
साद मसूद, बिल्कुल। और इन्हीं के लिए ये टूर्नामेंट भी सजाया गया है। और अच्छी बात ये लगी देखिए कि सिलेक्टर्स आते रहे हैं ग्राउंड में, हवा में खेल बैठे हैं। और फील्डर ने भी गलती कर दी। मोहम्मद मोहसिन फील्डर थे लेकिन कैच नहीं पकड़ सके। यहाँ फ्लिक शॉट खेलने के लिए गए कासिम अकरम, काफी दूर से दौड़ कर आए थे लेकिन पहुंच गए थे गेंद के नीचे, और आखिर में अपनी मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया। ये आखिर में ये इतना मुश्किल कैच नहीं था। क्या मुश्किल कैच पे पहुंचना होता है, मुश्किल काम तो कर लिया था। ऐसा लगा एंड पे जाके जज नहीं कर सके, थोड़ा दूर रह गया बॉल। पहला रन तेजी से लिया है लेकिन दूसरा रन नहीं बन पाएगा। बहुत तेजी से यासिर खान लपके बॉल पे। कासिम अकरम की भी बात करें अगर तो ये जाते जाते एक बड़ी इनिंग खेलना चाहेंगे टीम के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट में स्टार्ट्स मिले हैं इनिंग को लेकिन बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं जो कि उनसे तवक्को की जाती है, जितना टैलेंट उनके अंदर है। अब देखिए 37 रन की एक इनिंग खेली, 31 रन की एक इनिंग खेली, 14 रन की एक इनिंग खेली। 3 इनिंग्स में स्टार्ट मिले लेकिन उन स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सके। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इनके साथ जो है किसी बल्लेबाज ने दूसरी जानिब जमकर बैटिंग भी नहीं की। जब भी आए टीम मुश्किल में थी, और अगर बोर्ड पर रन से तो औसत कम थी, तो हर बार दबाव आकर झेलना पड़ा। मिडिल ऑर्डर में ये और मुश्किल हो जाता है। T20s में 68 पे 5। ऐसे ही चलते रहेंगे तो सिर्फ 105 रन तक पहुंचेंगे। और पहुंच गया है बैरियर टाउन दुबई साउथ में। यहाँ पे एक गेटेड कम्युनिटी बनाई गई है बैरियर टाउन की जानिब से दुबई साउथ में। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव। उठा के खेल दिया है, बड़ा शॉट और बहुत ही बड़ा शॉट है ये। 6 रन के लिए कासिम अकरम के बल्ले से। ये पैड्स की तरफ फ्लाइटेड कर गए। कासिम अकरम ने वहां पर अच्छा वार किया नबेतुल्ले अंदाज में। अच्छा आगाज किया इस ओवर का छक्के के साथ, और रिवर्स स्वीप, एक और अच्छी हिट। ये स्विच हिट थी दरअसल। पहले छक्का फिर चौका, दोनों स्क्वायर ऑफ द विकेट, दोनों तरफ। इसी टैलेंट और स्किल लेवल का तो हम बार बार जिक्र करते हैं। कासिम अकरम है, दोनों मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं जो शॉट सिलेक्शन पिच के दोनों जानिब, इससे पहले स्क्वायर लेग पे और इसके बाद स्विच हिट किया, थर्ड के ऊपर से 4 रन हासिल किए। यहाँ ये शॉट जो है स्पिनर्स पर बालादस्त होने के लिए ये अब नागुज़ीर हो गया है। मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं उनकी ये जरूरत है। अच्छा कट किया लेकिन ऑफ द विकेट गेंद तेज नहीं गई, इसलिए फील्डर को भी हायल होने का मौका मिल गया। अच्छी इनिंग खेल रहे हैं आज कासिम अकरम मुश्किल हालात में, क्योंकि उनके सामने विकेटें गिरती रहीं। स्कोर बोर्ड को उन्होंने मुतहर्रिक रखा है। और जिस तरह अक्सर होता है कि आखिरी ओवर जब भी किसी स्पिनर का आता है T20 में, तो उसकी शोहरत और साख से मावरा होकर उसको हिट लगाने के लिए जाते हैं सेट बल्लेबाज। वही किया कासिम ने। दो बहुत ही बेहतरीन शॉट्स। स्विच हिट तो कमाल का ही था, 6 रन भी हो सकते थे लेकिन एक बाउंस के बाद बाहर गया। आपने भी जिक्र किया था कि मुश्किल हालात में इनका साथ नहीं दिया अक्सर बैटर्स ने दूसरी जानिब से। लेकिन तारिक भाई
जो मुश्किल हालात में यंग बैटर रन्स करता है तो उसकी टीम में रिस्पेक्ट, ये नाम भी ज़्यादा बनता है। मौके मिले इन्हें अपनी टीम के लिए सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने के, लेकिन वो जितवा नहीं सके। आपने भी इतनी क्रिकेट कवर की है, तो बैटर्स वही बड़े बनते हैं जो मुश्किल हालात में टीम के काम आते हैं। टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को परफॉर्मेंस के अंदर कन्वर्ट करना होगा कासिम अकरम को। 14 गए। उनासी में 5। ये रावलपिंडी से मुत्तसिल हुकूमत पंजाब का रिसर्च सेंटर है ज़राअत से मुतालिक। वहाँ पर भी इस वक्त क्रिकेट खेली जा रही है, क्योंकि कोई खाली कोना गोशा मिल जाए छुट्टी के दिन में तो उसका गनीमत समझा जाता है। अच्छा यॉर्कर स्विंग होकर गेंद आई डिप करती हुई कासिम अकरम, वो खासी मुश्किल हुई इसे टालने में। काफी तकलीफ में लग रहे हैं। अपने ही पाँव पे बॉल मार लिया है या बल्ला मार लिया है शायद। अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि इन स्विंगिंग डिलीवरी थी ये ज़मान खान की जानिब से। या बल्ले से लगने के बाद बॉल लगा है, ये ज्यादा तकलीफ दे होता है। गेंद जो है वो जब बल्ले से टकराने के बाद आकर लगती है पैड पे भी, ये बूट पे, तो आपको हमेशा ज्यादा झटका लगता है। अब तक 5 विकेटें गिरी हैं। पहली आज 4 पर गिरी थी। मिर्जा ताहिर बेग बदकिस्मती से रन आउट हुए, उन्हें बुलावा आया और उसके बाद मुंह मोड़ लिया साहबजादा ने। ये एलबीडब्ल्यू विकेट के सामने थे। वकार अहमद, अच्छा गेंद को सिलाई पर गिराया अली ने, उसके बाद माज सदाकत ने कैच किया तैयब आरिफ का। ये कट करते हुए दरअसल ये तैयब आरिफ आउट हुए। साहबजादा फरहान इससे पहले गए थे और फिर ज़मान खान ने कामयाबी हासिल की। शहबाज जावेद को वापस भेजा 16 पे। 31 रन पर मौजूद है कासिम अकरम, उनका साथ निभा रहे हैं कप्तान फ़हीम अशरफ जो कि 11 रन पर मौजूद है। साहबजादा फरहान ने 15 रन बनाए, उनके अलावा कोई और बैटर ज़्यादा कुछ कर नहीं सका। 2 विकेट हासिल की मोहम्मद अली और ज़मान खान ने। जादाद, उस्मान और माज अभी तक विकेटलेस रहे हैं, लेकिन इकॉनमी बहुत कंट्रोल में है। ये इस तरह की हालत है एंग्रो डॉल्फिन्स की टीम के लिए। यहाँ से 150 तक पहुँचना ये गैर मुमकिन तो नहीं है, लेकिन खासा मुश्किल लगता है ऑस्ट्रेलियंस को फाइनल बराह रास्त खेलने के लिए। 17 ओवर्स और 2 गेंदों में उस हदफ तक पहुँचना होगा। ये उससे पहले यहाँ ये करीब करीब है 17.2 ओवर्स के करीब स्टैलियंस को फाइनल तक रसाई के लिए हदफ हासिल करना होगा हमारे स्टैटिस्टिशियन के मुताबिक। आज आखिरी दौर शुरू हुआ है लीग मैचेस का। हर टीम दूसरी के 2 बार मद्दे मुकाबिल आई। कोई भी टीम नाकाबिल शिकस्त नहीं रही टूर्नामेंट में। अलबत्ता एंग्रो डॉल्फिन्स जो है इसने तकरीबन सभी के सामने हथियार डाले। जहाँ कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया एंग्रो डॉल्फिन्स का। ये अच्छा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। काफ़ी मिसाइल्स
मसाइल का दौचार रहे एंग्रो डॉल्फिन्स। यहाँ 40 डॉट बॉल्स हैं इस इनिंग्स में। एक छक्का और 9 चौके जरूर लगे हैं। इनटू द पिच, यह खासी कारगर गेंद साबित हुई है, लेकिन इस बार लाइन पर नहीं थे। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं जमान खान जो हैं। इस वर्ष पहली बार इनको हमने वनडे टूर्नामेंट में देखा फैसलाबाद में, वहाँ पर अच्छी बॉलिंग की थी और अपने आप को ज़्यादातर 4 ओवर्स तक की इन्होंने महदूद किया हुआ है। अभी तक एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं है इनका करियर में। लेकिन फिर भी अगर इनको देखा जाए, इनकी परफॉर्मेंसेस को देखा जाए, तो काफ़ी मुश्किल मरहलात में भी इन्होंने बॉलिंग की है। डेथ ओवर्स में, आखिरी ओवर में भी काफ़ी दफ़ा डिफेंड किया है टोटल। तो स्किल तो है, क्योंकि अब इस एक्शन से इतना ये मुश्किल एक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन है नहीं, तो वो जो लंबी बॉलिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं वो शायद ये नहीं कर पाएंगे। पैड पर लगी अंपायर को ऑफ स्टंप नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने तवज्जो नहीं दी अपील पर। लेकिन पहले ये कहा जाता था कि अगर आपको वनडे में ये 10 ओवर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा कारगर हों, तो आपको एक दिन में 20 से 25 ओवर करने की आदत होनी चाहिए, इसलिए आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए। और अगर आपने 4 ओवर्स कामयाबी से करना है तो भी आपको जो है इससे ज़्यादा ओवर्स करने की आदत होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ओवर के मैचेस आपको खेलना चाहिए। ये उम्दा शॉट खेला, अगले कदम पर आए और निहायत शानदार पेशकदमी, कासिम अकरम का छक्का, जमा मर्दी से खेला गया शॉट। क्या तगड़ा शॉट है ये, इंतजार किया बॉल का और उनकी जोन में ही बॉल कर दिया जमान खान ने। वेट करते रहे और फिर पिकअप शॉट। क्या कमाल का शॉट खेलने, कितनी आसानी से ये छक्का हासिल किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हैदर अली ने इस तरह के शॉट्स खेले थे शुरू के मैचेस में और ये भी किसी से कमतर नहीं थे। अच्छा खेला इस बार फिर ऑफ द पैड्स, एक और रन के लिए कासिम अकरम ने। इनके पास खासा वक्त है तेज बॉलिंग को खेलने का, बैकफुट पर कट पुल करने की अहलियत है, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, इसलिए कभी कभार लगता है कि अभी तक इनका जो टैलेंट है उससे ये इंसाफ नहीं कर सके कासिम अकरम। आखिरी गेंद आने को है इस 15वें ओवर की और इससे पुल शॉट खेल दिया। फहीम अशरफ पहले से तैयार रहते हैं और फ्रंट फुट से भी पुल करने में इनको मुश्किल नहीं होती। यहाँ 15 ओवर्स के बाद 93 पर 5। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैनहट्टन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आखिरी ओवर जिसमें 14 रन आए, इस इनिंग का सबसे बेहतरीन ओवर साबित हुआ। लेकिन हारिस के पास ऑप्शंस काफ़ी हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं, इसीलिए ये मैनहट्टन मजीद ना बढ़े। ये मोहम्मद अली को वापस ले आए हैं, जिन्होंने 2 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और इस टूर्नामेंट में अलग नजर आए हैं। ये इनिंग्स की बेहतरीन पार्टनरशिप है, 30 गेंदों में 44 रन का इजाफा कर चुके हैं। दोनों के बल्ले पर गेंद आ रही है, लेकिन सोचना यही है कि कितने रन्स यहाँ स्टैलियंस को मुश्किल में ला सकते हैं। उनकी बैटिंग
बड़ी मजबूत है, उसमें बेहद गहराई है। इस 17.2 ओवर्स जो हैं वो उसके मुतालिक भी सोचेंगे, हदफ पर उन्हें जल्दी पहुंचना है, तो उसमें भी डॉल्फिन्स के पास इम्कान हो सकता है ये मैच जीतने का, अगर यहाँ से 150 के आसपास जाते हैं। और इसीलिए शायद थोड़ा सा ध्यान करना होगा यहाँ पे। अलाइड बैंक स्टालियंस को थोड़े रन्स आसानी से दे रहे हैं। जमान खान ने 3 ओवर्स में 27 रन्स दे दिए, 2 विकेट जरूर हासिल किए, लेकिन रन्स मैटर करते हैं इस वक्त उनके लिए। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि 130 से ऊपर रन्स जाएं। 130 रन्स तक अगर महदूद रखते हैं तो जैसे अभी आपने कहा 17.2 ओवर्स जो कि अभी अंदाज़ा है, उसमें वो करना चाहेंगे ताकि फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप यहाँ से डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। वो जो एक नर्वस गेम है बीच में क्वालिफायर का, वो नहीं खेलना पड़ेगा आपको, जो कि आप नूरपुर लायंस के खिलाफ खेलना है या स्टालियंस को या मार्कहोर्स को। आपको बताते चलें ये जो बहरिया डाउन चैंपियंस कप है और बोल्ड कर दिया इस बार, बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी, कासिम अकरम अपना बल्ला पहले चला गए और गेंद ने निशाना लिया उनकी लेग स्टंप का। मोहम्मद अली पार्टनरशिप ब्रेकर, और क्या अहम टाइम पे ये पार्टनरशिप तोड़ी है। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑप्शंस बहुत कमाल के हैं हारिस के पास, कभी भी ये मोहम्मद अली को लेके आते हैं और वो डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। थोड़ा जल्दी कर गए कासिम अकरम, एक बार फिर अपनी इनिंग में कन्वर्ट करना चाहिए था इस 40 को एक बड़े स्कोर में, इसीलिए शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी नजर आ रहे हैं। 34 बॉलों पे 40 बनाए, 95 पर 6। अब्बास आफरीदी नए आने वाले बैटर हैं, कल पहले ही बॉल पे आउट हो गए थे। चाहेंगे कि थोड़े रन्स किए जाएं, थोड़ा बैटिंग फॉर्म को बहाल किया जाए। 223 रन्स 131 की स्ट्राइक रेट से बना रखे हैं, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि मोहम्मद अली हम जानते हैं कि उनके पास कितना स्किल है, क्वालिटी है। जब आपके पास स्पेस होती है उसके साथ आप अगर वेरिएशन पे कंट्रोल हासिल कर लें तारिक भाई, तो आप एक बेहतरीन वाइड बॉल क्रिकेटर बन जाते हैं, फास्ट बॉलर बन जाते हैं। मोहम्मद अली T20 क्रिकेट में अब जुज़े लाजिम समझे जाते हैं। PSL में भी पिछले सीजन में भी बेहतरीन बॉलर्स में से एक थे, मुल्तान सुल्तान्स के, और इनिंग्स के हर मरहले पर बॉलिंग करने के लिए क्वालिफाई करते हैं। और यहाँ देखिए आगे चले गए थे लेग साइड में, गेंद की रफ्तार को काम में लाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उन्हें जुल दे दिया अली ने। बेहतरीन बॉलिंग, सीम को हिट करना जानते हैं बाखूबी, और इस टूर्नामेंट में तो वेरिएशंस भी गजब की रही हैं। शानदार सीम बॉलिंग, गेंद पड़ने के बाद उछल गई। अब्बास जो है उसकी बिल्कुल समझ से बालातर थी। लगता है कि 3 से ज्यादा विकेटें लेना चाह रहे हैं, मिल सकती हैं अभी। अभी जो बात हुई थी कि सीम को बहुत बाखूबी हिट करना जानते हैं। इससे पहले हमने देखा बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, अगला बॉल सीम अप बॉल, जिसको सीम को परफेक्ट जगह पे लैंड किया, और यही क्वालिटी आपको वाइड बॉल क्रिकेट में चाहिए आपके फास्ट बॉलर से, कि जो आप दोनों ही चीज़ों में महारत रखते हैं, सीम बॉलिंग में भी और वेरिएशन में भी। अच्छे तरीके से दिफा किया इस बॉल का। 16 ओवर्स के बाद 95 पर 6 एंग्रो डॉल्फिन्स।
4 overs. With Fahim and Abbas in the middle, in particular Fahim, they would be looking to post a respectable total, something to give to their bowlers to bowl at. And Alad Stallions have been clinical in terms of their bowling. Talat now has given the chance. 6th bowler for them. He can bowl into the surface. Change of pace, variations, it's all there. Cross seam delivery right away. Slow one into the zone, but straight to the fielder. Fahim is the key. He needs to push hard. Bahria Town Properties. Dekho Global. And they're going to build a world-class gated community in Dubai South. As Fahim looks to build this innings. And I think he might fancy his chances against Hussain Talat, who hasn't bowled much in the tournament. But he is in a dilemma what to do. Either to go after the bowler or just play out the overs. Malik standing in the hot spot once again. Fielding at long off. As the lights take over the daylight. And Dolphins look for something special from their captain. Length allowed him to free his arms. Searching for the second one, it's not there. Fahim has the resources and the skill set to go big. Abbas on the other end, he needs to provide some support. They've got Ramiz Jr., Awais and Ihsanullah. Ramiz Jr. scored 11 the other day. But Hussain Talat, against Hussain Talat, probably Fahim Ashraf will have to do the heavy lifting to get those boundaries going. Third is in the circle and quite fine. Got back foot point. A deep sort of a gully. Apesh. And what a take that is. No, for a moment. Yasir Khan was flying in the air, airborne. Did his best but couldn't really hold on to it. Would have been a spectacular catch. That would have been one special take. Just have a look at this. In fact, the arms were not fully stretched. So maybe he could have even gone with both the hands. But he opted to make it look like spectacular. In the end, not to be. As Fahim Ashraf hits it hard. And umpire Afridi has to get up and thank God that the ball didn't touch him on the way. Good reflexes, Mr. Faisal Afridi. You did well to get down. That was timed exceptionally well by Fahim. No chance for any fielder. Nearly had the umpire. As this stroke takes the total of the side above 100. Even the bowler closed his eyes. Lucky that there was no casualty over there. That was brute force from Fahim, targeting Hussain Talat, and rightly so. Back of the hand this time, but straight to the fielder. They've got everything protected for that sort of the length and line. Engro Dolphins picking up 7 in this over, 17 gone, 102 for 6. Muhammad Ali continues, 3 wickets for him, giving away just 9 runs, 1 maiden. Has been superb bowling. Got good partnerships going on with Zaman and Usman Tariq from the other end. Fahim Ashraf, he's loosening up. Waited for it.
and a very smart choice of shot. 45 was in the circle, picked up a boundary. Yeah, good at picking up the gaps, but you would have to question the placement of the short fine leg in the circle. It was too fine, and thus, just have a look at this. As the ball is placed, the man is just too much towards the keeper, and that allowed Fahim to go for this gap, and the ample of empty space over there. Slow one also was aimed at the pads. Outside off, it's in the air, fielder getting underneath. Mars takes it, has a safe pair of hands, and Fahim Ashraf, who was looking to accelerate, the skipper will be back in hut as Ali gets his fourth. No problems there, he's very well calculated. Just trying to keep it away from Fahim. Yeah, exceptional control of the slower ball. He held the ball away from his palm into the fingers and then bowled it from the back of the hand. Very deceptive, and it does bounce a bit extra as well. And the batter finds it hard to put this away. Fahim Ashraf on this occasion goes for 26, couldn't time it. And Engro Dolphins are 106 for 7. Now Wesley walks out in the middle. He's up against all experienced Muhammad Ali. Right on target. He's been superb, Muhammad Ali, mixing it up. The variation is there, the swing is there, seam up deliveries as well. Once again, trying to go big, top edge, lobbing an easy catch to the cover fieldsman, Maz, who has been catching everything that has come his way today. This is another one. So only 3 balls remaining in this over, and Muhammad Ali's quota is right up there, 18 wickets. He has the most wickets in the Barrier Town Champions Cup T20. What sort of a stroke was that, Marina? Would you explain? Yeah, I think he was in 2 minds. The weight shifted towards the off, but then look at that forward press and opening up. No extension of arms. 2 minds are never helpful as a cricketer. The plan should be clear enough. Just get off strike and allow Abbas Afridi, who's more experienced, more skillful with the bat, to come and do his stuff. As the women's cricketers, they await their final game, which is going to be played tomorrow morning, and they have a look at this game and the conditions where the game is going to be played. Perhaps a good idea for them. And one team is mentored by Shoaib Malik, the other by Misbah Haq, conquerors and superstars. Interesting battle over there. Yeah, the women's team that is present in the ground. The mentor is Shoaib Malik, and he has invited the team to come and just get the idea of the square and just to know what it feels like to be in the ground. Obviously, it'll be a big day. Enjoying fries for now, but tomorrow is the big day for them. Again, a slow one, but there was no room there. Dot, no, it's actually single. 6 of it with a boundary. Engro Dolphins 108 for 7 after 18.
People have come in good numbers. Youngsters dancing, enjoying the atmosphere. Good to see families coming out to Rawalpindi Cricket Stadium for the live action. Straying down the leg, Zaman will have to bowl that again. 109. What can these two do, Salman Butt? Well, try their best to score as many as they can. It's 109 now. Probably smash 15 or 22 overs and get to 140 and then try defend it. And feel, yeah, there you go. The first smash is high and it's long enough. It's 6. So this is what they have to do. Perhaps he's just listened to me. And he's got the length, seen it and whacked it over the fielder. No chance for anybody. And something for the crowd to catch only. That was a handsome hit from Abbas. Against Zaman, he was up and ready, crouched, picked up the length. And look at that swing. Bottom hand coming into play. Good base to generate the power. I wonder what Zaman is thinking. He's a tall guy, bowling him a half tracker with no pace on it. He deserved to go for this huge 6. Once again, he hits it flat this time. And it's another 6. So 12 of 2 balls. Perhaps you've asked for it a bit too late. The Dolphins now started to coming out of water. And there it is. Haris straight forward, walked to Zaman. This time the length was different. Probably looking for that Yorker, missed it. But not Abbas Afridi. Gave it a full whack. And sailed over the boundary. Well, now what will be the response? He has to nail the Yorker if he's looking for one. They've got deep fine leg. Third is inside, quite fine. Mid-off is there. Long on, deep mid-wicket, deep square leg. And protection at deep cover. So the fielding suggests a slow one is coming up. In fact, it's a Yorker, double bluff. And he had to nail it. Otherwise, he was going to get nailed. So there is no other option. Because Abbas is ready, he's going after him. And this length was perfect. Some handy runs from Abbas. Yesterday he got out or not. Straightforward delivery, hitting the pads, trapping him for LBW, but not today. Down the track, Zaman follows him, but just a single. He's not afraid to charge. Big over for Engro Dolphins. Not happy with the bat. This is the first one, right out of the middle of the bat. Pick the length. And this one, going downtown. Fuller length was there, but sailed over the boundary. Slower one into the surface. Abbas had no clue. This is the one to bowl to any batter at this time. And Zaman opting to go quicker. And quicker he went off the bat as well. Abbas Afridi really middling those two, and now he's bowled this slower one into the wicket, which I think was very high. Once again, just the edge going to the third fielder as Hussain Talat quickly takes off his jersey, and he's gonna bowl the next over. 19 bowled, it's 122 for 7. $14 of the penultimate over now. Hussain Talat with the last one. This will be interesting. Straight up in the air and mid-off, long off, has no chance. He'll just watch it sail over the boundary. Third 6 from Abbas.
He's nailing them. It was long, it was high, and the fielder only a spectator on this occasion, as the think tank comes closer to Santala to advise him what to do, because they are also looking to score these runs in the time that is required to take them directly into the final. And we shall know as the calculations come later on, but at the moment they would love to keep it as low as they can. It is already 128, and Abbas will be trying his best to make the most of the last 5 deliveries that are yet to come. Santala relies more on variations. Again, the length was shorter this time, couldn't really get the connection and gone. Hussain Talat has got the redemption. Abbas it is, the one to fall. Another one goes, this time caught on the point boundary. Mohammad Mohsin over there was under the catch in a decent position and took it easy. No problem there with the front foot. This time it was bowled on a length outside off. And Abbas, instead of going with the angle, went across the angle, and that's why this stroke went to deep point. He'll not like it, but he must have enjoyed the 3 sixes that he hit. Abbas Afridi, 21 of 11, brought some life to the innings, but now has to leave. 128 for 8. Ramiz Jr. now to face Santalat. And he goes downtown, but they've got protection there. They don't have much time. Just 3 more deliveries to go. Santalat managed to keep it away from Abbas Afridi. Just a wild swing, as you mentioned, not with the angle, but the length wasn't there in particular to go for that big shot. Just probably sliced it. And a bit of a cameo coming to an end. Yeah, the width was there. He could have gone over extra, but then you have to think like a batter to use the angles. And obviously he was thinking just power in the stroke. As this one has been smashed. And once again, just looking to get as much power in the stroke and not thinking about the method. Awais managing just the single. This is young Tayyib Arif, along with the other youngsters in the Dolphins dugout. And Zameen Gul, he's always having fun with the doctor. Once again, a simple catch and will be taken. It's Yasir, the fielder underneath, who takes it easily. Another one down, 9 gone now. It's 130 for 9. Hussain Talat picking up his second. No problems there. You can see the back of the hand just getting away. Ramiz on that occasion trying to create some room, but just lapped it into the hands of Yasir. Another one gone down. 130 for 9, Engro Dolphins, as Ramiz walks on 1. Ahsanullah, the man with a lot of arrows behind his back. And he, every time he picks up a wicket, he fires one in the skies. Now it's time to fire this ball into the skies and long. And absolutely no connection. Even Haris came before time. And this slow one was too good for him even. Signaled a wide in the end. Yeah, after that first 6 of the first delivery of this over, Hussain Talat has done well. Look at that, he was ready to hit it. Haris picking up the slow one.
Down the track and undone by another slower delivery. Premeditated, but that was expected from Ehsanullah. Ehsanullah getting his third, and that's a wrap for Engro Dolphins innings. Yes, a very successful over, a 3-wicket over for Ehsanullah to end the innings. 3 for 16 he took, restricting the Engro Dolphins to 131 all out. And they'll have to come out and get 132 to win, and that too in the time that will be required to put them directly into the final. That's exactly what they will look to do, as we have a look at this dismissal, where even if the ball had been bowled with pace, Ehsanullah was not in line. He was so far that there was no chance of connection. And he walks off, and happy team Stallions. They have done half of the job, but half of it still remains, as the batters will now look to do what is required in the required time to get their team directly into the finals, and they have this chance, a golden one. Engro Dolphins innings, not much to mention at the top. 15 to Saibzada Farhan. Tahir didn't bother the scorers, was run out. Waqar did the same. Tayyab came in and he was out for 3. Then some stability came in with Qasim scoring 40, Shabazz looking all right for 16, Fahim 26 and Abbas 21. And then the same story continued in the last 3 batters, and it all in the end totaled up to 131 for the Engro Dolphins. Allied Bank Stallions clinical yet again with their bowling. Muhammad Ali pick up the bowlers 4, just giving away 15. 2 for Zaman and a tidy over in the end from Ehsanullah picking up his 3, giving 16. A bowled out Engro Dolphins. So we have some news. We've got Muhammad Ali down around the boundary. थैंक यू वेरी मच मरीना. मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली, इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हैं. आज एक मरतबा फिर ज़बरदस्त स्पेल ऑफ बॉलिंग. कंग्रेचुलेशन अली, बहुत अच्छी आपकी फॉर्म जा रही है. आज एक और दिन था लेकिन यू प्रोड्यूस्ड वंस अगेन. देखिए, सबसे पहले तो टीम के लिए मैं जितना परफॉर्म कर सकूं उतना अच्छा है, और फास्ट बॉलर्स विकेट्स लेते रहें तो इससे अच्छी फीलिंग और कोई हो नहीं सकती. तो मेरा यही हमेशा से यही कोशिश रही है कि डिफरेंट चीज़ों को कम से कम ट्राई करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे T20 क्रिकेट में भी उतना ही मैं सक्सेसफुल रहूँगा. और T20 बैटर्स का गेम है. अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के कि बॉलर्स इन हैं गेम में और बैटर्स उस तरह जो है वो खुल के खेल नहीं पा रहे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो मेरा प्रोसेस है, जो मेरा वर्क एथिक्स है और जो मेरी प्रिपरेशन है, वो मैं जितनी ज़्यादा अच्छी करता रहूँगा, और ऑन द गिवन डे जितना ज़्यादा मैं बेहतर कर सकता हूँ वो अच्छा करता रहूँगा, तो T20 जो है वो बॉलर्स गेम भी बन सकती है. और टारगेट आपके सामने है. इक्वेशन आई डोंट नो कि आपको पता है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन लाइन पे है. आप ये मैच अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो आप फाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं. जी बिल्कुल ऐसा ही है. अभी तक हमारे पास अभी तक हमें पता नहीं है कि हमें कितने ओवर्स में ये रन्स जो हैं वो चेस करने हैं फाइनल के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन अभी तक इस सबको हमने माइंड में नहीं रखा. हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने मैच को जीतना है. जो फाइनल कैलकुलेशंस इस वक्त हो रही होंगी, तो जब आप जाएंगे अंदर तो आपको पता लगेगा. वेरी वेल बोल्ड मोहम्मद अली. वी रियली एंजॉयड योर बॉलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट. Thank you very much. Thank you. Thank you. And it's back to you guys upstairs in the comm box. Thank you, Shah Faisal. Allied Bank Stallions, well, they are up against the challenge. Not really. Need to chase 132, but in order to qualify for the finals directly, they'll have to chase it down in 17.2 overs or less. The highlights, and they were actually looking like highlights. The batsman came in, played a few shaky strokes, and then this misunderstanding came about, and leaving the stumps alone, and there was nobody to guard the crease. Run out, the first wicket, leg before wicket, the second one, Muhammad Ali bowled brilliantly, picking up wickets. Saibzada Farhan driving one through the covers for a boundary, and then cutting it straight into the point's hand, and he had to leave. And then came young Tayyab Arif and didn't do much. Zaman Khan sending him back via slow ball. Shabazz came in, pulled one, rotated the strike, looked good for some time, and then don't know what happened to him. Straight after Drink's first ball, trying to smash it out of Rawalpindi, but he had to go back to the pavilion.
Fahim came in. He played some wonderful strokes along with Qasim Akram, hitting a few long balls, some great shots for sixes, some reverse sweeps, and then just overstepping towards the offside, leaving all his stumps exposed, and was bowled behind his legs. And Fahim then trying to smash one, just lobbing one to the covers. In the end, there was some entertainment provided by Abbas Afridi, hitting a few long sixes and then holding out to the deep point boundary. And then Ahsanullah, well, he just allowed the ball to come and go. And in the end, 131 all out. 132 is the target for Allied Bank Stallions to win this game against Engro Dolphins with a run rate of 6.6 per over. Well, just a reminder for Allied Bank Stallions, in order to qualify directly for the finals, they need to chase this total down in 17.2 overs or less. That shouldn't be a problem, but there's something to bowl at too for Engro Dolphins. We'll take a short break and then we'll join you for the chase. Oh, disaster. Huge mix-up. Out, 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 yes! Not on top of it, but straight to box Sadakat. 18 के स्कोर पर चौथी विकेट गिरी, जमान खान आए, एक स्लोअर बॉल था जिसमें विकेट भी थी, शॉट था. Driven through the gap. उठा के खेल दिया है, बड़ा शॉट और बहुत ही बड़ा शॉट है ये. और बोल्ड कर दिया कासिम अकरम, अपना बल्ला पहले चला गए. There you go. The first smash is high and it's long enough. It's 6.
Right, we're back at the Rawalpindi Cricket Stadium. It's Allied Bank Stallions taking on Engro Dolphins. This is match number 20, the last league match. And how interesting it is that we're still not sure about the top position. And that's how the first inning happened. Top four failing again for Engro Dolphins, as has been the story for them throughout the tournament. Qasim Akram showing some resistance for 40 runs, 16 runs for Shabazz, and Fahim Ashraf in the end 26, with Abbas scoring 21, as they took the total to 131 in 20 overs. Allied Bank Stallions, well, from the word go, they were stomping on to Engro Dolphins wickets. That was a suicidal run straight away. Saidada Farhan knew Tahir was the one to walk. Maz with the field trapped, nipped back in quite sharply on that occasion. Muhammad Ali has been superb in the later games. This one straightforward catch. He wasn't in control where he was trying to place it. Again, outside off stump has been the problem for Engro Dolphins batters, just not utilizing it. A wild swing against Slingy Zaman. This one just Qasim Akram walking and falling towards offside. Fahim Ashraf, he had a responsibility, but one too many shots, ballooned that one straight up in the air, and Maz on the receiving end as well. Abbas with a cameo came in and then had to go. That was an easy catch for Mohsen. Hussain Talat was spot on with his variations in the end, picking up 3. Slow ones were not picked up or executed. Ahsanullah was the last one to fall for Engro Dolphins. Jahandat started off with Muhammad Ali. 4 for Muhammad Ali has been clinical, just giving 15 runs away. 2 for Zaman, and Hussain Talat with a tidy over in the end, picking up 3 wickets. Right, the pick of the bowlers certainly was Muhammad Ali. 4 wickets for 15 runs. What a transformation. Known for his red ball abilities, is delivering in white ball. That's the target, 132. And Stallions, if they need or if they want to go top of the order, they need to chase down 132 in 17.2 overs. If they're able to do that, then they will pull markers down and go to their number 1 position. They certainly have that firepower, they have the ability, they have the skill, they have motivation also. So all to play for, Marina. Yep, some good numbers are here in attendance to watch this match. Already chanting a lot for Jahandad. Some snacks are up. It's getting cooler, but the action is still there. And a lot to play for. Allied Bank Stallions have got the firepower, as you said, and at toss, Horace mentioned that. But this is the equation for them. They need to chase it in 17.2 or less overs, which they're totally capable of to directly qualify for the finals. Yasir Khan is back at the top of the order. Didn't play the last 2 games. Shamil Hussain was brought in, 783 runs with strike rate of 135. That 100 also. Yeah, that's one way of warming yourself up. They're all set for the challenge. His partner is the very talented Maz Sadakat. He's quickly making a name for himself also, courtesy to this Champions Cup. 208 runs, 134 the strike rate, best of 82. Skipper himself, Fahim Ashraf. Yesterday evening he managed to bag 2 right away in his first over. He has the capability to do so again. We've got slip in, deep square leg and deep fine to start off with. Right, play is the call from the umpire. Fahim Ashraf will bowl the first delivery of this run chase to Yasir Khan. Bowlers, whoever has been able to hit that seam, been successful. We saw that Muhammad Ali do it, Fahim Ashraf did it, Jahandad did it. So important to do that early on, especially with the new ball. Yeah, the key is just to pitch it up. Don't drag it short, allow the ball to swing or seam. And we probably missed out
Afaq. The way he announced his debut with a hat-trick and a fifer. How can I miss him? It's a crime. Wide delivery. Trying too much. This can happen. That's just not the right length from Fahim. He's getting some lateral movement. The shape is definitely there, but needs to pitch it up. Yasser is quite comfortable playing off the back foot. So you need to keep that in mind as a bowler. He's very good at it. Playing at the back foot, punches through the cover, extra cover region. That's where he likes it. But he's not giving him any room to do that. He's keeping it very tight with that line. Fahim Ashraf. Qasim Akram again got the start, could not quite convert it. It's been that sort of a tournament for the Dolphins when nothing has worked for them. Can they finish on high? Can they be the spoilers for ABL Stallions? First runs on the board with the bat. Couple for Yasir Khan. Now one team that surely will be looking at this game are the UMT Marcos. TVs will be on, watching keeping a keen eye on this game. Of course, #1 slot up for grab for either side. Yeah, ABL Stallions are well aware of the equation that stands for them for direct qualification. That's for now how the points table stands. UMT Marcos right on the top, no loins. They'll be sitting pretty and comfortable. Again, outside off stump. That movement is there, but Fahim has missed the line so far. Yeah, I wonder if Nubul Lions would be even watching this game now, because they know they will have to play the qualifiers. It's good. Mr. Azhar Ali is in the house. Vavra is also there. Mr. Chima also there in the house. It's good for them. They come to the ground on regular occasions. Almost every game they've been here in the ground, and that's what this Champions Cup is about. Finding the talent. Oh, was in the air for just a little while. That was the perfect line and length to bowl to Yasir Fahim. He's getting some shape, but just try and force him to come and commit to that front foot. He's not comfortable there. He's happy staying complacent, just angling it. You would want him to be there in that discomfort area, but Maz, he's been tremendous in this tournament. All cricketing shots, he can accelerate at any given moment, and has been a delight to watch him. I like how he values his wicket. Never throws it away. Cuts well, but straight to the fielder. It's too cool, too cold, Qasim Akram. This will warm him up. Yeah, the expression says it all. It was right out of the middle of the bat. Maz, he's comfortable cutting it. The length was there and room as well. Went quickly to Qasim. He does well, but have a look at that. Expressions. Still warming it up. He's sitting in the commentary box, Marina Iqbal. We can say it. A gentle end to the over with one. It's 6 for none.
Great crowd in. Avesali didn't have an ideal outing yesterday. Here is another opportunity. 6 for none, but the thing is that batters will be looking to go after him. That's the trouble. That's where he needs to be on spot, because they need to chase down this target in 17.2 overs, remember, to get to that number 1 position in the points table. Almost dragged it on, and will race on towards that boundary for 4. Everything working for Stallions and Mars. Yeah, Mars on that occasion just thought there is another opportunity to cut it away, slightly slower than Fahim Ashraf. On that occasion it did not came as quickly as he was expecting. Lucky he didn't chop it on to the stumps, but he'll take the result. Slip in. Normally he pitches it up against right-handers, but Mars is a lefty here. That is glorious. Stand and deliver. Magnificent from Mars. That's the talent Marina was talking about. Superb. Crunched it away. The length was better, but not the line. Giving freedom to Mars, you'll have the repercussions. Again, just allowing him to free his arms. Good transfer of the weight. Along the ground it went. That was hit pretty hard. Look at that steady head. Good extension and good base to generate that pace. Like a trace of bullet, they say. Went to the boundary in a jiffy. That's better. Good comeback by Avas. You need to be in that area consistently. Yeah, better line on that occasion. Just don't allow any room outside of him to Mars. He's getting some movement. The other day his length was a little fuller. That did create problems because he's not that quick. You probably have to delay your shot a little bit to get that timing right. And it is a sort of surface. If you hit the hard length, your batters might fall in a trap and get their bat hang out in front of the body. Mr. Mentor slash player, Mr. Shoaib Malik, Mr. Cricket, all ready. He's appealing for it. He's appealing for it. He's not going to get that. Throwing down the leg on that occasion. Avas already under pump with two boundaries. Also high probably. Mr. Faisal Afridi, former first-class cricketer, good fast bowler of his time. That's good. This is where he needs to be. Young Avas is learning. It's a good exposure, this tournament, for the youngsters. And Fahim has mentioned that again and again. It's all about growth, understanding where you stand as a player. And at this level, what is needed to be learned. You need to bring some more arsenal into your skill set as a batter, as a bowler. This is a whole different level. He'll learn. We've seen some youngsters getting this exposure and getting better day by day. Oh, this might go to the boundary. It does. Very risky by Yasir Khan. Will end the over with the boundary. 13 runs coming off it. 2 done, 19 for none.
making all those field changes. Fahim Ashraf, a deep point in place, third up in the circle. There's a fine leg in place and 45 inside. Good run, very good running. 132 to get, 17.2 overs. They're off to a good start. They do have firepower with Haris to come and a bit of a license to Hussain Talat, Mohsin, Shoaib Malik himself, Taimur also. Mr. Bilal Khilji, Asif Yaqub, deep conversation. Again, making some changes for Yasir Khan. He's been very proactive. Fahim Ashraf as the captain. It's just the results have not gone his way. Yeah, they're quite comfortable off that length and line. Straight up, Yasir can easily nudge it around. There's no troubles. It's swinging, but you need to pitch it up. Fahim usually hits those areas where he can probably invite and entice batters to come onto the front foot. These two are happy to deal with that sort of length. Look at those eyes, Mars searching for the boundary. They never lie. Off the back foot, but there is protection exactly for that sort of punch on the back foot. Yasir making a bit of a comeback. It's important sometimes just to take rest when you're not scoring runs. Ubaid Shah, he's been rested today. Good to see Haris engaging all those youngsters. There's always something to learn from the seniors. Definitely. 22 for none. It's good energy in the middle from the Dolphins. It's a nice cup of tea. Yeah, that's what we are having also in the commentary box. There you go. Not we, you. Oh, sorry, just me. And this also. I've been asking him to take rounds of walk, but he doesn't do that. But he's happy to have some sugar in the blood. Oh, that's beaten through him, is high. He knew it. Should have some tea and halwa. That came back quickly. Fahim. He has that tendency to do so. How did that miss the stumps? The bat and pad gap, through with it. Sharoon Siraj got a similar sort of delivery yesterday. He was not lucky enough. It stayed low. Yasir Khan is lucky enough that it went over the stumps. Almost. Almost. It's that length again, says Marina Iqbal. 3 done, 22 for none. What is he eating? The little boy in green. He's very happy eating halwa. Just like me.
94 wickets for Abbas Afridi. Best of 5 for 47. These conditions are more conducive for him. He can swing it. He's up against Mars, who will be looking to score runs as quickly as he can. That's nicely driven. That had 4 written all over it. Beautiful. Yeah, just the angle from Abbas gave that natural width yet again to Mars to open his arms. He's not going to miss those. He's too good for that. Again, just stepping down. Good solid base. Full extension and full follow through of the bat. I like that steady head. The hands doing the talking. Saying hello. It's all about the base, the strong base. As quickly as you learn that. And again, beautifully done. It was in the air for a while, but away from the fielders. Change of angle did not work for Abbas. Again, just the length allowing him to go aerial. Got underneath it, but most importantly with the straight bat. Yeah, just the hard length, it was there. Hitting it, but have a look at the response. Full face of the bat. Got the elevation and the result he was looking for. Back-to-back boundaries now. Change of angle, round the wicket this time. Oh, a direct hit. Good urgency shown by Yasir. He took off. Mars, the moment he played that shot, he took off. And was well backed by Yasir, but had to put that dive in. Ramiz need to target the base of the stumps. Wasn't happy with himself. Could have been an opportunity for them. Don't do it. Don't do it. They're doing well enough already. Wristy. That's class from Yasir Khan. Onside this time, a boundary. Struggling, Abbas Afridi. This was a poor ball asking to be hit. Yasir was up and running for it. He's not amused, but you need to think where you're bowling at. Just a gentle full toss and was put away with some power, whipping it actually. Yeah, eyes wide open. Searching for that. Wrist supporting that. Hit hard, dangerously hard. It's straight to the fielder. Oh, there was confusion. Mars wanted the strike back. It's hit too hard and straight to the fielder. There never was a run. Not sure what Mars was thinking. It was hit hard, as you said, straight to the fielder. He's trying to target it. Oh, initially he did. He called for it, but lucky for Mars. Bit of fumble. There is a saying, don't go for the run on a fumble. They never believe it. Never. Slower one wide will be called. Not called. 4 done, 35 for none.
अच्छा खासा आसान कर लिया है स्टैलियंस ने। 132 रन उन्हें बनाना है। इस बार पूरी तरह ये बल्ले पर नहीं आई, लेकिन फील्डर को डीप से आना पड़ा। दो फील्डर स्माइल हुए थे कैच की जानिब। मास सदाकत एक अच्छे बैट्समैन बनकर उभर रहे हैं। बहुत सी तवज्जो इन्होंने हासिल की है पिछले कुछ हफ्तों में। इससे कबल फैसलाबाद में भी उम्दा खेले थे सीजन की इब्तिदा में। ये 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ था। शाह फैसल कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हैं। ये वो दिन का वक्त और मरहला होता है जब बैटिंग आसान हो जाती है। इन ऐसी पिचेस पर जो निस्बतन टायर्ड हैं, गेंद बेहतर बल्ले पर आने लगती है फ्लड लाइट्स में। अच्छी जगह पे करना है जी बिल्कुल, ऐसा हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है। और इसके अलावा कुछ ये भी देख सकते हैं कि फील्डिंग यहाँ पे मुश्किल हो जाती है जितनी ठंड है। एहसानुल्लाह इस टूर्नामेंट में उनका कमबैक हुआ। साजिद शाह के साथ उनकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई। साजिद शाह कोर्स अपने ज़माने के बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, बहुत ही स्किलफुल फास्ट बॉलर थे और अब अच्छे कोचेज़ में शुमार होता है इनका। और ये बल्ला जो है ये भी गेंद के पीछे पीछे गया। यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। यासिर जो है अपनी टो बल्ले की बिल्कुल खो गए, लेकिन नतीजा उनके मिलकर रहा। ऐसा क्रिकेट के मैदानों में हमने देखा है पहले भी, लेकिन ज़्यादातर गेंद मैदान में ही रह जाती है। इस मरतबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ऐसा कम होता है जब बल्ला टूट के वो भी इतना दूर गया हो। लेकिन खुशनसीबी थी कि देखिए गेंद जो थी वो सही मिडल हो गई थी। और शानदार शॉट, इसका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। शॉट और वाइड थी ऑफ स्टंप के बाहर और पूरी आजादी मिल गई हाथ खोलने की यासिर को। जब आप यासिर को इस तरह के शॉट्स खेलते देखते हैं तो आप ज़रूर हैरान होते हैं कि उनका टूर्नामेंट जो है क्यों इतना अप एंड डाउन गया है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब उन्होंने झलक दिखाई अपने टैलेंट की। कितने ज़बरदस्त तरीके से वो बाउंस के ऊपर आए और शॉट को एक्सिक्यूट किया। बहुत ही भले लगे, बैलेंस भी उनका अच्छा था, लेकिन इनिंग्स को तूल देना उनका मसला रहा है। देखते हैं आज वो क्या कर पाते हैं। यॉक करने की कोशिश ही, अब सीधा ड्राइव किया, फील्डर नहीं रोक सकेंगे। जी हाँ, गेंद आउटफील्ड में स्किड करती हुई और तेज हो गई। फहीम अशरफ और साहबजादा फरहान दोनों इससे हटाने से कासिर रहे। हालांकि फहीम अशरफ काफ़ी तेज़ हैं अक्रॉस द टर्फ, लेकिन ये पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड बहुत बेरहमाना तरीके से गेंद की रफ्तार तेज़ होती चली गई। शायद जब गेंद फहीम की तरफ हिट हुई तो उन्हें लगा होगा कि वो इसे पकड़ लेंगे, लेकिन ये स्पीड में इजाफा ही होता चला गया और यहाँ पे फहीम को अंदाज़ा हुआ कि वो लेट हो चुके हैं और उनका अंदाज़ा सही साबित हुआ। पहले दोनों शॉट्स पर यासिर ने खासी कुव्वत सर्फ की थी, आखिरी शॉट उन्होंने टाइम किया। फिर से पुल शॉट, यहाँ पर भी 4 रन शुमार होंगे। ये शॉट ऑफ लेंथ गिरी और यासिर ने पामाल कर दिया। इस ओवर से वो 17 रन ले उड़े। 5 के बाद 52 पर कोई नहीं। बहुत ही सनसनीखेज ओवर रहा पिछला। एहसानुल्लाह पूरी रफ्तार से भागते हुए आए और उन्होंने यासिर को आजमाया, लेकिन यासिर ने 4 चौके हासिल किए। जो ओवर बढ़ता गया यासिर की टाइमिंग और शॉट्स की एक्सिक्यूशन बेहतर होती चली गई।
ऑफ कटर थी, कोई जवाब नहीं था माज सदाकत के पास। लेकिन जो यासिर खान है, एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि वो तेज़ बॉलिंग को खेलना जानते हैं, घबराते नहीं है रफ्तार से। पुल शॉट पर चौका लगाया, मुसलसल 4 बाउंड्रीज उनने पाई। ये शॉट ऑफ द ओवर था, स्ट्रेट ड्राइव और फिर पुल शॉट, यहाँ पर भी बेकाबू नजर नहीं आए। तो हम बात कर रहे थे यासिर खान जो हैं ये रन्स में इतना ज़्यादा नहीं रहे, भारत के खिलाफ ये अच्छा खेल गए थे इमर्जिंग एशिया कप में ओमान के मकाम पर। तो क्या सबब आप समझते हैं कि स्पिन पर अभी वैसी महारतें नहीं हैं जैसी पेस पर हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टैलेंट और सलाहियत तो है, लेकिन क्या वो इतनी मैच्योरिटी एज ए बैटर है, अपने गेम को उस तरह इनसाइड आउट समझ सके हैं अभी तक? लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट की शायद कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। अगर बड़ी इनिंग्स, लाजवाब मास सदाकत, उनके लिए इस टूर्नामेंट में रन्स आते रहे हैं और आज भी पूरे फ्लो में नजर आ रहे हैं। लेग स्टंप पर गिरी हुई गेंद को भरपूर तरीके से उन्होंने टाइम किया। जहां ये टाइमर हैं और टिपिकल ये ओपनिंग बल्लेबाज का शॉट था नई गेंद के खिलाफ, स्क्वायर ऑफ द विकेट। अच्छा पिकअप शॉट, स्लो डिलीवरी थी, उस लिहाज से टाइमिंग मजीद लाजवाब थी, क्योंकि अपनी और आउट हो गए। मास सदाकत को विट नजर आ गई थी, लेकिन वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाए। इस मरतबा चेंज ऑफ पेस जो है फहीम के लिए करामत साबित हुई। थोड़ा सा दूर बॉल कर दी उन्होंने महाज की हिटिंग आर्क से और उसका फल पाया। जहां ख्याल जो है जाहिर है वो हरगिज बुरा नहीं था, क्योंकि पावर प्ले की आखिरी गेंदें रह गई थी और जाना चाहते थे यहाँ पर चोटी के ऊपर से, उतनी रफ्तार मिल नहीं पाई बॉलर की जानिब से। मास सदाकत अच्छी बैटिंग करके वापस जा रहे हैं, 186 के स्ट्राइक रेट से खेले, 58 पर 1। इस मैच की सबसे बड़ी बैटिंग पार्टनरशिप, 58 रन की यहाँ यासिर और माज के दरमियान अभी अभी खत्म की फहीम अशरफ ने। एक बार फिर लेफ्ट हैंडर पर उनने अपनी बर्तरी साबित की, ज्यादातर विकेटें लेफ्ट हैंडर्स की लेते हैं फहीम अशरफ। हाँ, इनका अपना ही अंदाज है स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का। सही वक्त पर बल्ले का फेस खोला हारिस से, शानदार आगाज उनकी इनिंग्स का। बहुत एंजॉय किया उन्होंने अपने इस शॉट को, बहुत ही लाजवाब क्रिकेटिंग स्ट्रोक था। हारिस की इम्प्रोवाइजेशंस की बात तो करते हैं, लेकिन ये देखिए कैसे उन्होंने अपना वेट आगे की जाने भी रखा, लेकिन बॉल को आने दिया अपने पास, बिल्कुल एन वक्त पर बल्ले का फेस खोल के गैप हासिल किया। लाजवाब टाइमिंग, जरा भी कुव्वत सर्फ नहीं की उन्होंने। उसी शॉट को दोहराने चले गए थे, लेकिन इस बार तैयब को उन्होंने बिल्कुल सामने पाया। पावर प्ले यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है 62 पर 1। लाजवाब ओपनिंग आगाज था, किस्मत ने साथ दिया मास का, लेकिन जल्द ही वक्ती उस बैटिंग फॉर्म को उन्होंने हासिल किया जो इस टूर्नामेंट में उनका खासा रहा है। यासिर भी पीछे नहीं रहे, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बॉलर्स को मुश्किल में डाले रखा।
एहसानुल्लाह के एक ओवर में 4 चौके हासिल किए माज ने। उससे पहले फहीम अशरफ को भी उन्होंने रवाना किया और उसके बाद फहीम ही की गेंद पर छक्का लगाने के फौरन बाद आउट हुए। पावर प्ले का इख्तिताम 62 पर 1। अच्छा रिटर्न है एलाइड बैंक स्टैलियंस का। लेग स्पिनर रमीज को यहां पर जल्दी लाया गया है। फुल शॉट खेला। इनकी कारकर्दगी भी मिली जुली रही है। रमीज जूनियर की एक मैच में खासी नपीतुली बॉलिंग की थी। देखना ये कि आज इन कंडीशंस में जो कि इतनी सहल नहीं है स्पिनर्स के लिए, किस तरह का खेल पेश करते हैं। रमीज बहुत बासलाहियत बॉलर हैं। हमने उन्हें लॉन्गर फॉर्मेट में देखा, लंबे लंबे बॉलिंग करते हुए, और ज्यादा वो लूज डिलीवरीज करते नहीं। यहाँ थोड़ा सा फिर पीछे बॉल था। शायद वो इस तरह के बॉलर हैं जिन्हें लंबे स्पेल की जरूरत होती है। इस फॉर्मेट की जो है जरूरियात वो डिफरेंट हैं लॉन्गर फॉर्मेट से। मिली जुली, आपने बिल्कुल सही कहा कि मिली जुली परफॉर्मेंस रही है उनकी इस टूर्नामेंट में। हालांकि दिन के मैचेस में कंडीशंस अच्छी थी स्पिन बॉलर्स के लिए। 68 रन की मजीद जरूरत है। कम से कम 17.2 ओवर्स में ये हदफ हासिल करना है अगर ये बराह रास्त फाइनल खेलना चाहते हैं 25 दिसंबर को। और ये बुरी चाल नहीं है इन दोनों खिलाड़ियों के सामने। जो लेग स्पिनर्स पर इनको आउट होते हुए हमने देखा है बारहा, यासिर और हारिस को। बहुत ही ज्यादा शॉट गेंद थी, बाल बाल बचे। रमीज थोड़ा सा टर्न हुआ जिसकी वजह से बच गए और हारिस भी उसे लपेटना चाह रहे थे ऑन साइड पर। टर्न की वजह से वो इनको उस आर्क में ले नहीं सके। रमीज काफी ठंड है बाहर, अपनी उंगलियों को और बाजुओं को गर्म करने में वक्त लग रहा है उन्हें। कट शॉट खेल गए। ऑफसाइड स्वीपर दबाव में है, क्या है चौका बचा सके रियाज? ये देखना चाहेंगे टीवी अंपायर। ऐसा लगा कि अपने मोमेंटम में वो बाउंड्री से बाहर निकल गए थे। ये बिल्कुल ही एक आसान फैसला होगा अंपायर के लिए। पिंडी स्टेडियम की जो आउटफील्ड की रफ्तार है, एक और फील्डर को उन्होंने हैरान किया और एक स्टेप पीछे रह गए गेंद से रियाजुल्लाह। ये वो कट शॉट था जो हारिस ओवर के आगाज में एक्सिक्यूट नहीं कर पाए। सेम बॉल थी लेकिन वो पुल खेलने चले गए थे। ये बॉल सही जगह पे गिरी रमीज की। डॉट के साथ ओवर का इख्तिताम 7 के बाद एलाइड बैंक स्टैलियंस 69 पर 1। अब्बास आफरीदी, इन्होंने एक ही ओवर किया इससे कबल और महंगे साबित हुए। 13 रन दे चुके। अब आएंगे ये पवेलियन एंड से। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन वाइड ठहरी क्योंकि गलती की गुंजाइश जो है वो बहुत कम है। लेग साइड ऑफ साइड दोनों में ही बॉलर्स के लिए वाइड के जिम्मे में। बिल्कुल ये बैटर्स का खेल है T20। बैटर्स की बात करें तो आजम खान देखते हैं क्राउड के फेवरेट हैं लेकिन इस टूर्नामेंट में खेले नहीं। अच्छा शॉट खेला खुले बल्ले के साथ। यासिर ने बहुत ज्यादा जूनियर्स देख रहे हैं यहाँ। ये नामों की निस्बत रमीज जूनियर, उससे पहले वसीम जूनियर थे। आज
आपका ताल्लुक रावलपिंडी से। शाह साहब, एक सवाल है आपके लिए। पाकिस्तान के खेल में जो पहले एथलीट थे सीनियर और जूनियर जिनके नामों से मंसूब हुआ था, वो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था। तो इस सवाल मैं आपकी तरफ लेकर जाता हूँ। जो मुझे पता है, शायद मैं उसके अलावा कोई हो तो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन नज़ीर जूनियर ऑफ स्पिनर थे कि हाल ही में उनका इंतकाल भी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ ब्रेक बॉलर थे। या नज़ीर जूनियर, नज़ीर सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और फिर नज़ीर जूनियर टेस्ट क्रिकेट खेले। लेकिन पाकिस्तान ये क्रिकेट में शायद पहला नाम था, लेकिन जो खेल में जो पहला जूनियर और सीनियर का जो पहली बार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, यहाँ एक रशीद सीनियर थे, ओलंपियन थे यहाँ रावलपिंडी के। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 ओलंपिक्स मुकाबलों में हिस्सा लिया था। जब रशीद जूनियर जो मशहूर सेंटर फॉरवर्ड आए बन्नू से, जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनवाया था 1971 के बार्सिलोना वर्ल्ड कप में, तो जब वो आए तो फिर रशीद जूनियर और रशीद सीनियर की इस्तेलाह पहली बार इस्तेमाल हुई। जी हाँ, और शायद फिर अगर हॉकी पे ही रहे तो मंजूर जूनियर और मंजूर सीनियर उनके बाद आए, फिर शहबाज जूनियर, शहबाज सीनियर। मेरी यादाश्त में तो यही 3 ही हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक इरफान सीनियर, इरफान जूनियर हॉकी में हुए। क्रिकेट में आपको बहुत ज़्यादा जूनियर्स नज़र आ रहे हैं। आपने वसीम जूनियर की बात की और पिंडी का कनेक्शन आया, तो वसीम जूनियर भी, मोहम्मद वसीम जो कि यहीं रावलपिंडी के ही टेस्ट क्रिकेटर थे और पाकिस्तान विमेंस के हेड कोच हैं। इसके अलावा मज़े की बात यह कि अगर मैं गलत नहीं, आरिफ सीनियर जो थे वो नज़ीर जूनियर के छोटे भाई थे, लेकिन उनके नाम के साथ सीनियर लगता था। यहाँ रावलपिंडी की मुकामी क्रिकेट में काफ़ी मशहूर ऑफ स्पिनर थे वो भी। आपके नाम का कोई जूनियर है? शाह साहब, हम तो खुद अभी सीखने वालों में से हैं, सीख रहे हैं। हम तो खुद जूनियर। ये आपकी ज़रा नवाजी है, इसलिए उर्दू कमेंट्री में इस पूरे खित्ते में जो मुकाम और इज़्ज़त अल्लाह ताला ने आपको दी है वो आप डिज़र्व करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आखिरी गेंद आ रही है अब अब्बास की। इस बार विकेट के बिल्कुल सामने से खेल गए यासिर, खुश नसीबी ने उनका साथ दिया। इस ओवर में कदर खामोशी रही, मैदान में सिर्फ 6 रन बन सके 75 पर 1। Oh yes, I think that's out. Still going to refer it to the third umpire, but by the look of it and by the celebrations from Shehbaz, it looks certain, and he started to walk back. Yasir Khan, as I welcome along former captain Salman Butt. Thank you, Ali Yunus. And yes, the batter has given himself out. Yasir has to leave. 32 of 26 he got at as the umpire still watches on. This is him stepping out and Ramiz adjusting his length accordingly, and no chance. That is gone by a mile. And Shehbaz very efficiently takes the bails off. And he's definitely very efficient with the gloves. Best keeper in the President Cups. And now he has his chance to play at this bigger platform of Champions Cup. So Stallions now are 75 for 2.
निशान गलत पे खड़ा हो गया मैं अभी ये था ये खड़ा हो गया So the mentor himself walks in and obviously is looking to take his team directly into the final. And if they do well, they wouldn't bother playing the semi-final. Shoaib Malik, right-hand batter, no introduction required, 550 games almost, and a mammoth runs 13,450 something. As this is wonderfully bowled. All right, you have a bowler who is the best bowler of the President's Cup, the highest wicket taker. Why don't give him a slip? The ball is turning, he's just taken a wicket. And just have a look, he's turning it a mile. And to beat Shoaib Malik up front is not an easy thing to do. Yeah, rocks back, plays it towards cover. And you have nothing to lose also, all to gain. So why not to give youngster the confidence? And imagine somebody like Ramiz Jr. getting the wicket of Shoaib Malik will boost his confidence for sure. And as you said, the ball is turning. It is, it surely is, and great line and great pace also. So Manwad is really happy. Why not? It's both play for our institute and the first class side. And just look at that, giving air to the ball drifting in, turning away, a classic leg spin, and the slip just comes in. Wonderfully bowled. Are we watching a game which is a different format? You hardly see a spinner give this sort of an air and get this sort of a turn in this format. This is classic leg spin bowling on display. Almost running out Shoaib Malik, trying to stop the ball. He's definitely somebody for the longer formats, has to be. As the over is bowled, after 9, it's 76 for 2. Yeah, 2 overs, 9 for 1. Ramiz Jr. beautifully bowled leg spin. Pass Afridi in for his 3rd over. Carried it towards 3rd. And Ehsanullah, look what he has done. Right through him for 4. What's going on? Ehsanullah missing it altogether. And boundary. It will help the cause of Stallions, but have a look at this. At this level, this should be very basic stuff, this. There is no excuse for this. He was in no position to stop that ball. Being casual to the full. As now, he's been sent to the fine leg. Once again, guides it to the 3rd, where Ramiz makes no mistake, and just the 1 run. So it's 50 required to win from 48 balls if they need to qualify directly into the final. Otherwise, it's 64 balls in total to get the runs. These batters would look to make sure that they go directly into the big game. And they've been helped by some poor fielding effort from the Dolphins. Normally, if Shoaib Malik and Haris are on crease, 9 out of 10 times they will chase down that 48 runs, 48 deliveries and 50 runs.
Ball him, what a big wicket. Oh, I didn't like it. Shoaib Malik wanted to give himself room. Delivery that was full within the stumps. And timbers for Mr. Malik. Rush of blood where it is least expected. The mentor himself, have a look at this front foot check, and it's perfectly fine. Bowled within the stumps, trying to, he was in no position to play that stroke. He backed away too far and in the end lost all the balance and has to leave. One he scored of 3, and now it's 3 down for 82 for the Stallions. Hussain Talat, the new man in, the man in form, the man who has scored the only 100 in this Barrier Town Champions Cup T20. And a concerned look on Mansoor Amjad's face. Well, he should be all right because the captain is in there. Hussain, their in-form player, is in there. And it's almost just over a runner ball required. Yeah, it's a good opportunity to have a little drinks break. Yeah, openers got a good start. 32 for Yasser, 28 for Maz. More importantly, Captain Har is still there on 18. And Shoaib Malik just losing his wicket to Abbas on 1. Hussain Talat, the new man in. 3 wickets, they have fallen. First one was Maz Sadakat. There was no timing whatsoever. Lost his wicket, a good catch by Abbas. Then it was Yasir Khan, a classic piece of leg spin bowling from Ramiz, getting the best of him. And then Shoaib Malik. Mr. Salman Butt, if you can explain this. Well, this is beyond comprehension, and there is something which can be explained. Fahim 3 overs, 19, 1 wicket. Nawaz 1 over 13, expensive. Abbas 2.3, 24 for 1. He's just taken Shoaib Malik's wicket and is going to operate. Gonna bowl the remaining 3 deliveries. As Hussain Talat comes in and straight away looks for a single, playing it with soft hands. But the batter, captain on the other end, has other ideas. He doesn't think that the single was on. So a bit of life into the Engro Dolphins side now. But, Stallions had the options. Jandar, there's somebody who can hit big. He's a good all-rounder. So is Temur. We've heard that he can also hit big. So if they want to make it in a hurry, they had those 2 options, like Imran Randhawa was used by Marcos earlier. This is good. Slip in place. Fielders coming in the circle, trying to block the one, creating some pressure on the Allied Bank Stallions. Good cricket this. Yeah, you talk about the big hitters. What, 50 runs required of 35 deliveries? Or 45 deliveries rather, to qualify for that final directly. They can do it by playing regular cricket. You don't have to be in extra hurry.
Regular cricket, normal cricket would do for them. And they'll find a boundary every now and then. Hussain Talat this time ending the over with a boundary. 10 done, 86 for 3. At the same stage, Engro Dolphins were 50 for 4. And Allied Bank Stallions are 86 for 3. Dolphins were 50 for 4. That's the difference. Rami is bowling well, and we know Haris doesn't back off. So interesting contest at hand. And this has been reverse swept. We knew Haris. He's not gonna bother to wait. And Rami is looking at him. This is a good boundary. Good contest. Reverse sweeping. Taking the ball from outside the leg stump, and playing it with the spin. Is he going to be brave enough to toss it up and see what Haris does? He should. He does. Not quite, but still. It's a good battle between Haris and Ramiz. Now there's a battle of the colleagues. Hussain Talat. And this is the qualification scenario for the Barrier Town Champions Cup T20. Allied Bank Stallions need to score 132 in 17.2 overs or less to qualify for the final directly. Hussain Talat going to face Ramiz. Both represent the same team in the domestic season. Plays him off his pads, placing him well for a single. Yeah, he's been in good touch. Hussain Talat has been contributing towards the team. 40 runs to win. 41 deliveries for that #1 spot. Yeah, he's picked that length up and placed it in the gap. Tire break does well, not before they come back for the second. Yeah, Ramiz knows that Haris is going to go after him, and he's just changed the trajectory of his bowling a bit flatter now, a bit quicker. But I think the spin that he's getting, he should look to bowl the same speed and same trajectory like this. This is the way, that's the place to bowl, and this is the speed and the trajectory. Haris will have to take a risk if he bowls like this. And you can tell whenever the Ramiz gives the ball air, Haris is not comfortable. Yeah, he's looking for do something different. He's swept it for 4. Ramiz Jr. shouldn't mind this. Yeah, doesn't matter. That was well bowled. It's a risk taken which has come off, and Haris is very good at that. 11 overs complete. It's 98 for 3. "34 runs of 54 deliveries, 34 runs of 38 for that #1 spot. Quick run. This is where these two are so good. Both Hussain Talat and Haris running between the wickets, judging the run and running straight away. Calling is good.
responding it goes. It's been a great performance as a team for Allied Bank Stallions. This is a new way of warming hands up. You have somebody having tea and you just shake his hand and get your hands warmed up. This is good innovation from Umaid Asif. It doesn't matter even if his pockets are vacant, but still he can shake hands. This is huge, this is high, and this will go the distance. 6 runs. Wonderful, innovative shot this from Haris, who is good at it. And what was for the Engro Dolphins, it's a no ball, costing them 7 runs and a free hit to come. He really middled this. Yeah, overstepping and getting punished. Just have a look at this stroke. Goes outside the off stump, pivots, watches the ball right till the end and takes it from underneath. No intention of hitting it anywhere else apart from the 6 over this square leg boundary. Smashed and test for the fielder there who does well. Fahim Ashraf there, saving 3 runs for his side and just the 1 to Haris of the free hit. Yeah, 25 more runs. 107 in 11.2 overs, Allied Bank Stallions. Nicely driven. That's a good combination. Santalat and Haris. Oh, no. Everything is good. Yeah, one side aggressive and the other side just calm. And the combo working together. Barrier Town Properties. They go global. Building a gated community in Dubai South. As the wait is on, umpire has some concerns. And now is okay to resume. He's appealing for it. Umpire Afridi says no. He thought he's got the man. He's mixing it up, Abbas Afridi. Going down the leg side, good decision from umpire Faisal Afridi. The bowler were pleading his case, but straightforward decision. It has been a good outing. Faisal Afridi's made good decisions, has also shown good reflexes on one of the strokes, which was hit hard by Fahim Ashraf. Once again, full toss wrapped on the pads. Once again, going down the leg side. Quite an eventful over. A huge appeal, a glorious hit, a no ball, a good fielding, good running, and a full toss being missed. Quite an eventful over, lots happening. 10 runs off the over. 24 needed, 49 deliveries in normal circumstances. Another full toss. And 1 run will end the over. 12 done, 109 for 3.
लाइट बैंक स्टैलियंस 12 ओवरों के अख्ताम पे हारिस कप्तान मौजूद हैं और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रमीज बॉल को टर्न कर रहे हैं और थोड़ा फ्री हैंड दिया नहीं है बैटर्स को, टर्न जरूर मिल रहा है। यहाँ हारिस की बैटिंग में एक बालिग नजरी भी नजर आई है। इस टूर्नामेंट में जो कहा जाता है अब ये बड़े हो गए, बड़े समझदार बल्लेबाज, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इस साल खेल कर आए हैं। शॉट्स की तो पहले भी कभी इनके पास कमी नहीं थी, खुद को ज्यादा बेहतर समझने लगे हैं। फ्लाइट डिलीवरी थी, विकेट कीपर ने बड़ी चाबकदस्ती के साथ शहबाज ने गेंद को लिया। बहुत ही मिक्स फील्डिंग परफॉर्मेंस नजर आई है एंग्रो डॉल्फिन्स की जानिब से। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फील्डिंग थी जिसको मिस कर दिया और बाउंड्री दे दी। एहसानुल्लाह का दिन आज अच्छा नहीं जा रहा। एहसानुल्लाह जब बॉलिंग कर रहे थे तो रमीज ने भी मिस फील्डिंग की थी, वहां एक चौका इनको रोकना चाहिए था, लेकिन अब लगता है कि ये 1 ऑल हो गया और अब यहां पर विकेट। गेंद बहुत से ज्यादा टर्न हुई रमीज की और हुसैन यहां पर पहले बीट हुए और उसके बाद विकेट कीपर ने उन्हें चलता किया। हुसैन तलत ये जानते हैं कि टर्न मिल रहा है रमीज को, लेकिन फिर भी इन्होंने लाइन कवर नहीं की, ना पिच ऑफ द डिलीवरी के करीब पहुंचे, सिर्फ अटैक करने की नीयत से निकले। यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और बहुत ही शानदार गेंद, ये देखें बहुत आगे निकल गए थे, टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और शहबाज गेंद टर्न होके दूर गया था, लेकिन बहुत ही अच्छी कलेक्शन और ये बड़ा झटका है। हुसैन तलत 11 रन बना के वापस 114 पे 4 लाइट बैंक स्टैलियंस। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रमीज जूनियर ने 2 विकेटें हासिल की, दोनों सेट बल्लेबाजों की, यासिर और हुसैन तलत की। तैमूर खान ये नया इजाफा है स्टैलियंस की सफों में, इसी साल आए, 6ठा मैच खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा रन नहीं बने इनके। आज मौका है कि नॉट आउट जाएं अपने कप्तान के साथ वापस। यहाँ 18 रन की टीम को जरूरत है और यहाँ पर ये ग्लव को लगती हुई गई, स्लिप के बराबर से, ज्यादा दूर नहीं थी फील्डर के हाथ से। बहुत ही दिलचस्प शॉट तैमूर ने खेलने के लिए ऑप्ट की, टर्न हो रहा था, स्लिप खड़ी थी और काफी करीबी मामला हो सकता था, थोड़ा आगे गिरा हुआ गेंद था जिसपे ये शॉट लगनी नामुमकिन थी। रमीज जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सिचुएशन को रियलाइज करना पड़ेगा तैमूर को। 16 रन दरकार हैं। फिर टर्न देखने को मिला है। रमीज जूनियर की सबसे अच्छी बात यह कि डरते नहीं है, ये हवा देने में जानते हैं कि सरफेस से परचेज मिल रहा है, आगे गेंद करेंगे चाहे बड़ी हिट लगे। 13 ओवरों के बाद 117 पे 4।
एलाइट बैंक स्टैलियंस की टीम जो है ऐसा लगता है कि एक कदम फाइनल में रख चुकी है, क्योंकि अगले 4.2 ओवर्स में उनको 15 रन बनाना है। अगर कोई अनहोनी नहीं होती तो उनको पहुंच जाना चाहिए फाइनल में। फुल शॉट खेला, कंट्रोल शॉट है, एक ही रन के लिए। इस मैच को यूएमटी मार्कोर्स की टीम भी बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि बैरियर टाउन चैंपियंस T20 कप में अभी तक फैसला नहीं हो सका कौन सी टीम बराह रास्त फाइनल खेलेगी 25 दिसंबर को, जबकि 2 दिन के बाद 23 दिसंबर को यहां पर क्वालिफायर खेला जाएगा इकलौता। और क्वालिफायर की जो टिकट्स हैं वो pcb.tcs.com.pk पर दस्तयाब हैं। उम्दा शॉट, स्मैश किया इसे डाउन द ग्राउंड, 4 रन के लिए, और हदफ अब और ज्यादा पहुंच में स्टैलियंस की। एहसानुल्लाह का आज का दिन अच्छा नहीं गया, बॉलिंग में भी बहुत पीछे लेंथ कराते रहे हैं, फील्डिंग में भी कुछ खास मुतासर नहीं कर पाए, और नो बॉल भी होगी। बाउंड्री तो हासिल की है हारिस ने, नो बॉल पे एक और लाइसेंस टू हिट मिलेगा, और ये काफी बड़ी नो बॉल है। यह कई बार हो जाता है, बॉलर जब ज्यादा तेज गेंद करने की कोशिश होता है तो पाँव जो है वो हाथ से आगे निकल सकता है। तो ये फ्री हिट, रफ्तार कम कर दी, लेकिन रन्स की रफ्तार नहीं कम होगी। ये 4 रन्स और गिनती में आए। अच्छा पुल शॉट हारिस की तरफ से, बैक ऑफ द हैंड कराया था एहसानुल्लाह ने, लेकिन लेंथ जो थी वो फिर खिंची हुई थी, जिसकी वजह से हारिस तैयार खड़े होते हैं, क्रीज पे मौजूद होते हैं, और काफी डीप थे इस बार, और लाइन भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बासानी एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। 5 रन दरकार हैं अब एलाइट बैंक स्टैलियंस को ये मैच जीतने के लिए, और ये मेक श्योर कर लेंगे कि फाइनल में भी ये प्लेस होंगे। ये जो इकलौता क्वालिफायर है, जो सेमीफाइनल हम कह सकते हैं, ये 23 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इसके टिकट्स दस्तयाब हैं। और यहाँ ये कैच मुश्किल गेंद बाहर चली गई, आरिफ की पहुंच के जल्दी खत्म करने गए थे ग्लोरी शॉट के लिए हारिस। बैरियर टाउन चैंपियंस कप T20 का अब आखिरी और फैसला कुन मरहला 23 दिसंबर को एक बार फिर याद दहानी है, 3:30 बजे मुकाबला है। टिकट्स आप खरीद सकते हैं TCS सर्विस सेंटर से, इसके अलावा pcb.tcs.com.pk इस वेबसाइट पर जाकर। बल्ला जो है सिर्फ रावलपिंडी की हवा को छू सका हारिस का, एक तीर से वो 2 शिकार करना चाहते हैं, ये निस सेंचुरी भी हो जाए, टीम भी फाइनल में पहुंच जाए। और डिजर्व भी करते हैं हारिस, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, 28 गेंदे ली हैं सिर्फ, जानते थे क्या इक्वेशन है, टोटल गो के बड़ा नहीं था, लेकिन विकेटें दूसरी एंड से गिरती जा रही थी, इसलिए जिम्मेदारी खुद पे ली है। एंग्रो डॉल्फिन्स के लिए एक और हार, ये 8वीं लगातार हार होगी इनके लिए। इनने बहुत कुछ खोया है, पाया क्या इस टूर्नामेंट से एंग्रो डॉल्फिन्स ने, मरीना जी? एक और वाइल्ड स्विंग, दूर था काफी गेंद, लेकिन जितना मैंने देखा है यंगस्टर्स को जरूर मौका मिला यहाँ पे। फहीम अशरफ से भी ये बातचीत होती रही है, और एक तरह से एक्सपोजर यंगस्टर्स को मिला है। गो के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले पाए, लेकिन काफ़ी कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए। वकार अहमद एक अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी नज़र आए, ताहिर बेग अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए। रमीज़ जूनियर को मौका मिला, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जो खिलाड़ी नहीं इम्पैक्ट कर पाए उनको ये ज़रूर एहसास होगा कि एक प्लेटफॉर्म मिला था। हुरैरा की बात करते, पोटेंशियल बहुत है उनके पास। 4 रन हासिल हो जाएंगे, और इसी चौके के साथ एलाइट बैंक स्टैलियंस ने ये गेम भी जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। यहाँ कप्तान हारिस ने हर अवल का काम किया, यहाँ पर नाकाबिल शिकस्त 19 सेंचुरी
स्कोर की। 8 चौके और 1 बुलंदोबाला छक्का लगाया। 52 रन पर वो वापस आए हैं नाकाबिले तस्खीर। और 100 और जो 32 का हदफ था ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। 6 विकेट से एलाइट बैंक स्टैलियंस ने शिकस्त दी है एंग्रो डॉल्फिन्स को। एक टीम जो है सर फहरिस्त हुई और दूसरी ने और ज्यादा पस्तियों को छुआ। ये 8वीं शिकस्त है एंग्रो डॉल्फिन्स की। ये देखिए इनका खेमा कितना ज्यादा खुश है क्योंकि बराह रास्त ये फाइनल खेलेंगे। वनडे टूर्नामेंट में नहीं पहुंच सके थे, चैंपियंस की दौड़ से बाहर हो गए थे, लेकिन हारिस ने अच्छी कारकर्दगी पेश की। 1 डाउन आते रहे। आज यासिर खान ने अच्छी इब्तिदा फराहम की। मास सदाकत जो है शुरू से ही उम्दा खेलते हुए आ रहे हैं। और खुशी आप देख सकते हैं एहसानुल्लाह का जो सेलिब्रेशन एक्शन है वो रिपीट करना चाह रहे थे। हारिस इस बार बहुत अच्छा लीड किया है। इनफरादी तौर पर खुद अपनी परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी रही। डिफरेंट प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है। शोएब मलिक बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं एज अ मेंटोर भी और खेल भी रहे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी शेप अप हुई है और जहांदाद के आने से, जमान के आने से मजीद स्ट्रांग हो गई है टीम। यहाँ आज मोहम्मद अली ने फिर बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उन्हें 4 विकेटें हासिल की। अपनी बैटिंग लाइन का काम खासा आसान कर दिया। दूसरी जानिब महमूद हामिद, सरफराज अहमद और साजिद खान इन कोचेस के लिए ज़ाहिर है अभी इनको कुछ दिमाग सोजी करना होगी कि आइंदा चलकर कैसी टीम तश्कील देनी है जो बेहतर खेल सके। 32 रन यासिर ने बनाए। रमीज जूनियर की गेंद पर स्टंप आउट हुए। शहबाज आज विकेटों के पीछे अच्छे लगे। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने स्टंप किया। मास सदाकत ने 28 रन बनाए। ओपनिंग पार्टनरशिप जब टूटी उसके बाद 3 विकेटें जो हैं वो गिरी 24 रन के इजाफे में, लेकिन हदफ फिर भी पहुंच में रहा। हारिस ने इस बात को यकीनी बनाया कि उनकी टीम न सिर्फ हदफ तक पहुंचे बल्कि फाइनल में भी। एंग्रो डॉल्फिन्स टोटल कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं, इसलिए बॉलर्स के लिए भी एक चैलेंज था इसको कंटेन करना। विकेटें हासिल ज़रूर की। 2 रमीज जूनियर ने की। अच्छा परचेज मिल रहा था उन्हें। एक फहीम और अब्बास ने, लेकिन कुछ ज़्यादा निकाल नहीं पाए इस टूर्नामेंट से एंग्रो डॉल्फिन्स और एक और हार उनके नाम। आज शाम के वक्त बैटिंग के लिए कंडीशंस ज़्यादा बेहतर थी। ये उनका कवर ड्राइव मास सदाकत का। दूसरी जानिब रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल यासिर की जानिब से। स्टाइलिश हैं मास सदाकत। दाएं और बाएं हाथ का ये जो पेयर है खासा दर्द-ए-सर बना। मास सदाकत ने छक्का लगाया स्क्वायर के ऊपर। फिर फहीम अशरफ ने उनकी विकेट ली। बिल्कुल इसको अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हारिस ने आते ही एक बहुत ही जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। यासिर इस बार आउट हुए, पिच पे पहुंच नहीं सके थे। डिलीवरी की और स्टंपिंग की शहबाज ने। शोएब मलिक आज थोड़े जारियाना अंदाज में आए ज़रूर थे। एक बार फिर ऑफ साइड पे ऊपर खेलना चाह रहे थे। हारिस एक एंड को संभालते रहे और ये रमीज की विकेट, बहुत टर्न हुआ था गेंद लाइन से बहुत और बॉल से बहुत दूर थे। हुसैन तलत अपनी विकेट गंवाई इन्होंने, लेकिन ये विनिंग शॉट थी हारिस की, जहां पे उन्होंने अपनी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल की, मैच भी जीता और फाइनल में अपनी पोजीशन भी। एलाइट बैंक स्टैलियंस एक और अच्छी शानदार कामयाबी उनके नाम और इत्मीनान ज़रूर होगा उन्हें। एंग्रो डॉल्फिन्स ने आज 131 रन बनाए। आसिम अकरम अच्छा खेले, 40 रन स्कोर किए। फहीम अशरफ और अब्बास स्कोर को निस्बतन बेहतर करने में कामयाब हुए, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ। एलाइट बैंक स्टैलियंस की बैटिंग को देखते हुए हारिस ने 52 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली। खतरे की और घंटी उनने बजाई है फाइनल से पहले।
ये 6 विकेट से मुकाबला जीता है स्टैलियंस से। तो डबल लीग का दौर मुकम्मल हुआ और यहाँ पर अव्वल पोजीशन हासिल की है एलाइट बैंक स्टैलियंस ने। और इस वक्त एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब। After 14 days of intense cricket and 20 league matches, we finally have our finalist, and it's Allied Bank Stallions who outplay Engro Dolphins in the last league match by 6 wickets to qualify for the finals of Barrier Town Champions T20 Cup, and we're all set for the presentation. And in the presentation party, I have with me Mr. Wasim Ahmed, who is Head of Sports Barrier Town. And first of all, I would request Mr. Wasim Ahmed to please step forward, who will present the Player of the Match trophy and cash award of PKR 25,000 for his splendid spell of bowling. 4 for 15, Muhammad Ali. Superb spell of bowling at a time for the team.
मोहम्मद अली, वेल डन, बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन रही है रेड बॉल से वाइट बॉल पे, अब तो आदत हो गई है। मैं ये काफ़ी बार कह चुका हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट आप जितने अच्छे तरीके से खेल चुके हैं T20 में आप उतना ही सक्सेसफुल रहेंगे। शॉर्टर फॉर्मेट है, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस के साथ आपको बॉलिंग करनी पड़ती है और मुझे तो ये टेस्ट क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट से काफ़ी आसान लगती है। और जो कंट्रोल आपने दिखाया डेफिनेटली, आज जैसे आपने कहा कि रेड बॉल क्रिकेट आपको बहुत हेल्प की है, बट यहाँ पे आके जिस तरह का कंट्रोल इस मौसम में आपने दिखाया है, रियली हैप्पी टू सी। और देखिए कोई भी फास्ट बॉलर है या कोई भी क्रिकेटर है, उसे इतना रोबस्ट तो ज़रूर होना चाहिए कि वो कैसी भी कंडीशंस हों, कैसा भी वेदर हो, वो उसमें अच्छा परफॉर्म करके दे। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू करूँ। आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छा करते हैं, सीम भी हिट करते हैं, वेरिएशन भी दिखाते हैं। आप कब डिसाइड करते हैं कि बैटर को आपने कौन सा बॉल कहाँ करना है? देखिए अर्ली ऑन तो मेरा नहीं ख्याल इस पिच से अगर आप नए बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी प्री एज्यूम मैं नहीं करता पहले से कि बैट्समैन मुझे ये कर देगा या ये कर देगा, अनलेस पिच पे आपके लिए इतनी हेल्प मौजूद नहीं है तो फिर मैं वेरिएशंस की तरफ जाता हूँ, वरना ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स पे रहने की कोशिश करता हूँ और उसी में जो है वो कामयाबी मिलती है। 1 गेम टू गो, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया आपने, कितने खुश हैं, क्या फीलिंग्स है और फाइनल के लिए क्या प्लान होगा? देखिए हम लोग 1 गेम एट अ टाइम चल रहे हैं और एक्साइटेड हैं, बट फाइनल को भी जो है वो मेरे ख्याल में नॉर्मल इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करेंगे और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। All the best for the final, Mohammad Thank Ali. you very much. The player of the match for his splendid spell of bowling. Now, time to talk to the losing captain for Engro Dolphins, Fahim Ashraf. Tough luck, Fahim. Ends the campaign, end हो गई। कैसा देखेंगे इस टूर्नामेंट को और क्या पॉजिटिव लेके जाएंगे? बिल्कुल जी, टूर्नामेंट हमारे लिए पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमारी कोशिश थी जितने हम नए लड़कों को चांस दे सकते हैं तो यही किया है, क्योंकि जब एज अ टीम आप अच्छा नहीं खेल रहे तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होते। लेकिन हमने कोशिश किया कि जितने हमारे नए लड़के हैं उनको चांस दे, तो उसमें ये हमारे लिए थोड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि जो नए लड़के हैं ना, नए चेहरे हैं, वो सामने लेके आए हैं। तो काफ़ी ऐसे लड़के हैं कि जो हमारे आगे जाके बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं, जैसे तैयब आरिफ है, अवैस है, रमीज़ है, वकार है, काफ़ी लड़के, सुलेमान है, काफ़ी लड़के अब ऐसे इस टूर्नामेंट से हमें मिले हैं कि वो आगे आपकी तरफ से बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं। या बहुत ज़्यादा चेंजेस भी की गई, हमने देखा ऑलमोस्ट हर मैच में आपने चेंजेस की गई, तो क्या वजह लगती है आपको कि वो कॉम्बिनेशन बन नहीं सका टीम का? आज बिल्कुल कॉम्बिनेशन तो शुरू से नहीं था बन सका, लेकिन हमारी कोशिश थी जब हम टूर्नामेंट से आउट हुए, हमारी कोशिश ये थी कि हम जितने नए लड़कों को चांस दें, क्योंकि पुराने लड़के तो हमने सबने देखे हुए थे, जब आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा और आप मैचेस नहीं जीत रहे, तो कोशिश यही थी कि नए लड़कों के लिए उनकी एनर्जी, उनकी थोड़ा डिफरेंट उनकी एनर्जी होगी, तो नए लड़कों को चांस दे, हो सकता है कि उनसे थोड़ा कॉम्बिनेशन बन जाए। वरना ये है कि जो नए लड़के आएंगे वो नए लड़के आके थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ताकि सबकी नज़र में आए। वो नए लड़कों को आपने जिक्र किया, तो कौन से ऐसे नाम हैं जिनको हम लुक फॉरवर्ड करें आने वाले टूर्नामेंट्स में? आज बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया है, तैयब आरिफ है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उसको हमने अंडर 19 में भी देखा जब वो लाहौर में लीग हुई है। अवैस लड़का फास्ट बॉलर, वकार, सुलेमान है, रमीज़ है, ये 5-6 लड़के ऐसे हैं कि ये आगे जाकर पाकिस्तान की तरफ से और हमारी तरफ से सबकी तरफ से लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। चलिए, टफ लक फॉर दिस टूर्नामेंट, सी यू सून इन अदर टूर्नामेंट्स। थैंक यू वेरी मच। Right now, time to talk to the winning captain, a very happy, smiling Mohammad Aris. I like this smile. अच्छे लगते हैं आप हंसते हुए। अल्लाह में इस तरह हंसते मुस्कुराते रखे। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस रही, सैटिस्फाइड है एज अ कैप्टन? वेल काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस तरह की हम चीज़ चाह रहे थे वही हुआ है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि फाइनल में पहुँचे। कम्प्रहेंसिव विन था अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुशी हुई। प्लान आपको पहले पता था कि 17 ओवर्स में अगर आप करते हैं तो आप फाइनल में पहुंच जाएंगे? ज़्यादा जल्दी हमें नज़र नहीं है, बहुत कूल और काम तरीके से आपने चेस किया ये। वेल हमारा प्लान सिंपल था, क्योंकि शुरू में सर्कल में हमने क्रिकेटिंग शॉट खेलनी थी, वही हमें मिला। जो 50 का हमने टारगेट रखा था कि 6 में करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमें 60 मिला। तो उसके बाद चीज़ें आसान होती गई, क्योंकि शोएब भाई ने मुझे ये प्लान दिया कि आप आखिर तक जाओ, वो खुद आपको बैट बॉले करेंगे, क्योंकि जो बॉलर होता है वो खुद उसके जहन में होता है कि अभी ये मारेगा, अभी मारेगा। तो वही मैंने किया कि मैं आखिर तक गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश किया। और अब फाइनल में कैसा प्लान देखेंगे हम, क्या तैयारी है, क्या किस तरीके से फाइनल की तैयारी होगी? बिल्कुल तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम जब आपको ज़्यादा रेस्ट भी मिलता है वो भी सही नहीं होता, तो उसको लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन प्रैक्टिस करें अच्छी तगड़ी ज़रा, और फिर जो भी आता है फाइनल में तो उनके खिलाफ प्रिपरेशन करें। किसको प्रेफर करेंगे, मार्क हॉर्स को या लायंस को? लायंस को। लायंस को प्रेफर करेंगे, राइट? यू सेड इट ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स। थैंक यू। हारिस लाइन से खेलना चाहेंगे, बैक टू यू गाइस इन द कमेंट्री बॉक्स। Thank you, Ali Yunus. All smiles there for Allied Bank Stallions. They've registered their win.
That's how the things unfolded. Engro Dolphins posting 131, a familiar scenario for them. Top scorer Qasim with 40, Fahim scoring 26, 21 for Abbas. Muhammad Ali picking up 4, 3 for Hussain Talat and 2 for Zaman. In response, Allied Bank Stallions leading from the front. Haris scored 52 not out with the winning runs. Yasser with 32, 28 for Maz. Ramiz Jr. picking 2, 1 each for Fahim and Abbas. And Allied Bank Stallions have won it comprehensively with 6 wickets. Well, after this match and the results, this is how the points table stand. Allied Bank Stallions up on the top, qualified directly for the final. UMT Marcos on number 2 and Newport Lions, they both will be playing a qualifier and one will be the decider. We will watch the qualifier, which is day after tomorrow at 3:30 live from Rawalpindi Cricket Stadium. It's going to be a really good contest, so don't miss out that one. This is for tomorrow, women's one-day tournaments final, where conquerors will take on stars, and it will be an early start of 9:30 live from Rawalpindi Cricket Stadium. A lot of action is lined up, and from all of us till now, it's good night for the next game. Into the leg side, good connection, it's sailing over. Walker has got one off the middle of the bat. और इमरान के 50 रन मुकम्मल. Oh, he launches that one too. ये 6 रन, ये मैच तमाम. Not on top of it, but straight to Boss Sadakat. Driven through the gap. इसका बैट फोल्ड कर दिया. कासिम अकरम अपना बल्ला पहले चला गए. And again, beautifully done. That's class from Yasser Khan. This is huge, this is high, and this will go the distance. और इसी चौके के साथ Allied Bank Stallions ने गेम भी जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह भी